Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us for this very interesting and debated discussion on the Finance Supplementary Bill 2019 and brackets second supplementary bill. This subject is of importance not just for politicians but for professionals also. So even though there may be opposing political views in the panel, but I think it will be an interesting discussion. More importantly, this is a discussion which is very close to the hearts of many tax professionals, and therefore we have a gathering of our star tax professionals from across Pakistan today. Not just Mr. Umar Zahir Mir, who's our champion tax player, but Yawar also, who's been conducting many webinars on tax in the recent past. And congratulations to you, Yawar, also, because this year you were the member advocate from Pakistan, and your predecessor Umar is also smiling, and Umar this time was a judge in the panel and as an MNP chair. So I think congratulations, excellent work that you've done. And I think if we continue to work like this and continue to present Pakistan as a role model to other markets, I'm sure one day we will be a global winner also. So I think everybody else can take inspiration from both Umar and Yawar. They're both member advocates from Pakistan. I mean, phenomenal amount of work that these two guys do when it comes to members. And a number of times, Umar has said this, that my alma mater comes first. Right now, he's coming from a political gathering, but he's given that up and he's here because he's to talk to you. So I think that should be an inspiration for all of us, and that's how sense of community within the ACC fraternity will build. Just a couple of important announcements, and then I'll come back to the subject and then hand over to the two experts sitting here. One, Sajid is in Islamabad right now, and he has given me, we had a good discussion yesterday, and he's given us an idea that why not start having member open house sessions where members, if they're facing any issues, we should have the MNP members sitting on one side and the members on the other side attending through webinar and discussing the issues that they are facing in their day-to-day life. I think Umar is a witness. Every other minute my phone will ring and some member will come up with a new issue that they're facing. So for example, some university is not accrediting us or not allowing admission. So things like these. I think it would be good if we have a collective voice of members at the forum where we at least get a direction of what members are facing. I mean, in addition to, let's say, their employment efforts, इस पे हम बहुत ज़्यादा help भी कर रहे हैं. In addition to the CPD efforts, इस पे हम बहुत help कर रहे हैं. If there are any other issues that the members are facing, I think this is the time when we talk about it. So, inshallah, next week we will be holding one such session with members. Do watch out for this session and do join us to discuss issues. Even if you don't have any issues and you want to maybe offer solutions, I mean, by all means, come forward and have a discussion with members. So Sajid wanted me to categorically announce this in the session today. I will make this announcement once again before the end so that those people who join afterwards, they should be able to hear it as well. So I think with that, we only have 2 hours for this session, which is probably not enough to go into detail of this subject. But I will instantly sneak out of here and hand over to our 2 tax experts, Umar and Yawar, to take on the discussion from here. Thank you very much. Over to you guys. So Umar, are you going to begin? Yeah. Hello, assalamu alaikum, and welcome to all of you in today's session. Thanks for sparing the time. As Harun Saab has already introduced, this is perhaps one of the most pertinent topics that is currently being discussed in the professional fraternity, and not just within the taxation fraternity, but across the board. No matter whether you are working in practice or you are employed somewhere or you're a businessman, this impacts everyone, all the professionals, all the businesses. With this, we have a new concept today that we are going
introduce you. Myself and Jawar are going to take you through this. And the way we'll do it is Jawar is going to go through the presentation, and then he'll discuss with me the implications and the impact. And we'll be taking question answers in between regularly. So I'll suggest, because the session is very time constrained, if you have any questions, just write them down in the dialog box. So when we take the question answers, we have the questions already coming in. Most of you know us already. My name is Umar Zahir Mir. I'm a fellow chartered certified accountant, CFA charter holder, chartered public finance accountant, anti-money laundering specialization, fraud risk management, etc., etc. My detailed profile can be accessed on my WordPress site, Jawar. You already know Jawar is also one of our expert members practicing in taxation, and he also teaches at PAC. So I think with the brief introductions done, which I've kept really succinct, keeping in view the time limitation, I request Jawar to begin with the presentation so that we can take the session forward. In fact, if Jawar, you can introduce yourself. I'm getting some concerns from members that their voice is not clear. So we want to be sure if they can hear you and Umar equally throughout. Okay, sir. Assalamu alaikum, everybody. My name is Yawar Muhammad. I'm an ACCA and also an ICAEW member, currently working as a head of tax department in a chartered accountant firm based in Peshawar, and also the faculty member of PAC Peshawar. And thank you so much, Mr. Umar and Mr. Harun, for such a generous introduction and appreciation and everything. And I think we should start now our presentation on Finance Supplementary Second Amendment. I'll take this start. As we all know that this bill has been presented on 23rd January, and it's a bill. It's not been yet not been converted into act. तो हमारी कोशिश है कि जो बिल में amendments propose की गई है, we just take you through it and we'll discuss on different aspects. So we'll take a start. I'm giving you an overview of finance bill. कि इसको हमें बजट क्यों नहीं कहना चाहिए. I think it's not a budget. It never be called a budget. It's an economic package. क्योंकि जब हमारी न्यू गवर्नमेंट आई और उन्होंने देखा कि क्या इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम हमारे एनवायरनमेंट में, तो उन्होंने फिर इस तरह से इसको लिया कि हमें चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को किसी डायरेक्शन पे लेके जाएं. ठीक है, जो जो हमारे इश्यू थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, एक्सपोर्ट्स की प्रमोशन नहीं थी, बिजनेस करना जो है वो इंतहाई डिफिकल्ट हो गया था और इंपोर्ट्स ओरिएंटेड सारा सिस्टम चल रहा था. तो इट इज काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक पैकेज व्हिच हैज डायरेक्टेड it will direct our economy towards industrialization, towards export promotion, towards ease of doing business and import substitution. So it is the main theme of this finance bill, and I think Mr. Umar, you will agree with me on that कि इसको जो है वो बजट कहना जो है इसके साथ ज्यादती होगी, and it is a very positive bill, और इसको हम economic package कहें तो ये ज्यादा बेहतर होगा. Okay. Well, this is more about making certain adjustments which are in view of promoting ease of doing business. And for me, these terms, package or mini budget, more have political connotations. If we talk from a professional perspective, what really matters to us is what has been proposed and what would be the implications for businesses, professionals, etc. So yeah, overall, I agree with you. Let's proceed. Okay. We'll start from income tax, whatever changes are proposed in regarding income tax ordinance 2001, and we'll take a start from section 5A. हम इस तरह से इसको लेके चलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पहले क्या सिचुएशन थी और फिर प्रपोज क्या किया और उसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो है वो है टैक्स ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेक्शन 5A. Presently, tax at 5% of accounting profit before tax is leviable on every public company other than a scheduled bank or mudareba that derives profit for a tax year but does not distribute at least 20% of its after-tax profit through cash, including by way of bonus share, within 6 months of the end of the said tax year. It's very clear कि अगर आपने distribution नहीं की at least 20%, तो आपको जो है वो फिर 5% टैक्स देना पड़ सकता था. ठीक है, अभी भी यही प्रोसीजर चल रहा है. प्रपोज क्या किया गया कि considering the hardship faced by the public companies and in line with the demand of tax experts, it has been proposed that the aforesaid tax will not be payable for tax year 2020 and onward. तो ये एक पॉजिटिव प्रपोजल आया है कि क्यों हम जो है जबरदस्ती उनको फोर्स कर रहे हैं
हम कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं और हम फोर्स हमें करना पड़ रहा है कि नहीं आपने हर हालत में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैपिटल बिल्कुल फॉर्म नहीं करना, तो इट्स काइंड ऑफ अ पॉजिटिव स्टेप इफ इट कन्वर्ट्स इनटू एन एक्ट। व्हाट उमर साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि एक पॉजिटिव जो है वो स्टेप है, एक प्रपोजल है कि जिसकी वजह से जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ कम से कम मूवमेंट जा सकती है। Well, there are always two sides to every coin. The issue with this one is that yes, on the face, it does facilitates businesses. It also helps the company, especially. It would really, hopefully, boost our stock exchange as well. The reason why the original amendment was introduced was that, unfortunately, our ground reality is that our economy is not fully documented. There are also unscrupulous elements, and there are certain loopholes which are used for, I would just say, tax avoidance, which means that the treasury and the government ends up losing. On the flip side, the problem is when steps such as 5A are introduced, they also penalize genuine businesses who have no fault of their own, and that ends up hurting the ease of doing business. So I think certainly this is a right step and in the right direction. However, it still requires some kind of check to be introduced. I mean, why 5A was introduced in the first step? Because there were some, in fact, a lot of companies that were not paying any dividends at all. Okay, it does make sense if you are doing some expansion or maybe for a year or two, you are not paying out dividends. But if you are not doing any expansion or if this practice without any credible reason is going out for 5 years, 7 years, 10 years, then obviously you can read between the line what is happening and why it is happening. So while yes, this change can definitely assist our stock exchange and promote ease of doing business, as a professional, I would suggest that we should also look towards introducing some safeguards to avoid a repeat of the situation which led to the introduction of 5A in the first step. Thank you, Yawar. Onwards to you. Wonderful explanation. Okay, the second amendment which has been proposed, it's about the capital carry forward of loss on disposal of securities. We have different sections for capital gains, and one that deals with the public company securities is section 37A. Presently, loss sustained on disposal of securities cannot be carried forward to a subsequent tax year and it just get waste, it becomes dead, और हम उसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है अगर हमें फ्यूचर में कोई गेन्स हो 37A की सिक्योरिटीज में, तो हमें उसके ऊपर टैक्स प्रेजेंट करना पड़ता है और लॉस जिसको हम एसेट भी अपना तस्वर कर सकते हैं वो हमारा बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। The proposal is given that to provide for the facility for the carry forward of loss sustained on disposal of securities up to 3 tax years for which the loss was first computed. एंड इससे ये होगा कि एटलीस्ट जो हमारी एक सिचुएशन है इस टाइम सिक्योरिटीज की, इट्स गेटिंग डाउन, अगर हम उसको बेचें हमें काफी लॉस हो सकता है फ्यूचर में, अगर जो है वो एनवायरनमेंट हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सस्टेनेबल हो गया और हमें गेन्स आना शुरू हो गए, तो एटलीस्ट वो लॉस जो हमें करंट ईयर में हुआ होगा, नेक्स्ट ईयर में हुआ होगा, वो हम आगे 3 सालों में उसको ले जाके अपने टैक्सेस को लीगली रिड्यूस कर सकते हैं। एंड ये मैं आपको बताता चलूं कि दिस provision would be applicable if it gets converted into act from 1st July 2019. Please, Mr. Umar, present your view regarding this change. What you think, whether it's a positive or negative regarding the situation of our, by taking into account the situation of our stock exchange especially. Voices. Thank you, Yawar. This is actually one of those changes which we can probably tell our members that ACCA has also been advocating. Because if you analyze this change by any standard of ease of doing business or tax implication, it's just, I mean, if people are taxed when they sell securities and have a capital gain, then they should also be incentivized in the case of a loss. And it's normally allowable in many of the developed jurisdictions and most of the stock exchanges in the world. So when we are talking about promoting ease of doing business, and that has been the crux of this supplementary finance bill, to promote ease of doing business.
I think indeed this is a positive step and one that is in the right direction. It should promote ease of doing business with regard to our stock exchange, and it should also incentivize the investors because in case there is a loss, the additional potential burden where the loss could not be carried forward beyond 1 year would now be done away with, hoping, which is quite likely, that this bill does become an act. So, with regard to that, it would also open up the possibilities of tax planning when you are talking about stock exchanges. To sum it up, a very good step. Onwards to Thank you, Yav. थैंक यू सो मच ओके द नेक्स्ट चेंज जो हमें नजर में आता है वो है कि फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर दैट इज बीन प्रपोज्ड एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप बिकॉज the difficulty is really that we cannot bring all the small traders and shopkeepers into TaxNet, because to find them out and to circulate the notice and to perform the audit and everything, it's very complex for such a large number. And the change has already been introduced in 2007 in sales tax for retailers, and they have no need to get their self-registered in Sales Tax Act 1990. Rather, they are paying sales tax via discos through distribution companies in their electricity bills, and for this they are free from every kind of complexities. And similarly, presently, the taxation of small traders and shopkeepers regarding direct taxes is very complex, as a burden of record keeping, harassment by concerned jurisdiction, and delayed justice keep them mentally distracted. And it is proposed that a special procedure for scope and payment of tax, filing of return, and assessment may be specified. Initially, it will be implemented in Islamabad Capital Territory as a pilot. और सेल्स टैक्स स्पेशल प्रोसीजर को देखते हुए ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि रिटेलर्स जो है वो जब स्पेशल प्रोसीजर्स के तहत अपना टैक्सेस डिस्कोस के थ्रू पे कर देते हैं तो उनको ये टेंशन नहीं होती कि कोई आएगा हमें हैरेस करेगा, हमें रिकॉर्ड रखना है, हमें हर चीज प्रेजेंट करनी है, बैंकिंग चैनल फॉलो करना है, देयर सो मच टू डू। तो एटलीस्ट वो उस बर्डन से बिल्कुल सेफ है। अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाती है, जो कि एज अ पायलट जब ये इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें बिल्कुल इसका आइडिया हो जाएगा कि कैसे जा रही है, एंड होप इट विल बी सक्सेसफुल। तो इससे जो है काफी ट्रेडर्स को सुकून मिलेगा, और इससे टैक्स अथॉरिटीज को भी फायदा होगा कि वो अपनी जो अटेंशन है वो किसी और तरफ, एक ऐसे क्लाइंट्स की, ऐसे टैक्स पेयर्स की तरफ लगा सकेंगे जिनसे जो है एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, रादर देन कि वो स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स पे अपना टाइम वेस्ट करे, अपने रिसोर्सेज वेस्ट करे, और उसकी वजह से जो है ना कोई रिकवरीज हो सकती हैं, ना टारगेट्स मीट्स हो सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप। व्हाट यू से मिस्टर उमर अबाउट इट? Indeed, and I'm glad to share that this is another of ACC's proposal, which has been accepted, although partially. We have been promoting the concept of universal self-assessment, which, by the way, had previously been introduced in Pakistan as well. And it's good that the government has now taken heed of that and is introducing that concept in a watered down form, I would say, for small traders and shopkeepers. This pilot project concept was actually something that we proposed when people from FPR would show their concern that if we'll introduce this, what if the revenue collection goes down and all those issues. So ACCA does actually did propose, okay, what you can do is, why not introduce this as a pilot project, see the result, and then move forward. The concept is very simple. You try to make things easier for small traders, for the businessmen, for the people who are already in TaxNet, and you try to focus your efforts on those people who are not in the TaxNet. Arun Sab shared with you, I was in a meeting before, and we were discussing this, that there is a data, as I've shared with you many times. In addition to all the withholding data, Nadra has data of almost 3.5 million people who do not even have NTN numbers, but luxurious lifestyles, multiple properties, travel abroad. So that's the area where we need to focus, rather than ending up harassing the people who are already in the TaxNet and creating further trust deficit. So this does seem like a very good project. I would wait for further details and the final shape, what is actually implemented, and the result of the pilot project. So onward to you. Thank you. Okay, the next proposal that has been given is about the provisional assessment for Allow me to do this slide,
And after that, I'll pass on the rest of the slides to you. And All we'll try to do it very succinctly because unfortunately, we have this time constraint. So we really would have to run through the presentation. The provisional assessment for undeclared offshore assets, section 123(1)(a), is actually a very important proposal. The change that has been proposed is that the commissioner will be empowered to issue a provisional assessment order to any person for the last completed tax year, taking into account the undeclared offshore assets of the person. What does it mean in layman language? What it means is, previously, if a person had not disclosed their assets, there was a certain process to follow. They have simplified that, and they have just given the commissioner the power. If they have the evidence or if they have concrete evidence, they can simply text that person. That's in layman terms what we mean by issuing the provisional assessment. Why it's good? It's good because at the moment the provisional assessment can be made for only those assets which can be impounded by the government or agency, and that's quite a cumbersome process. So what's effectively been done in this particular area is that the process has been simplified and the scope has been widened. So overall, it does seem like a very good step. Onward to you, Yav, on the next slide. Okay, thank you so much. Okay, the next change we see it's about commercial importer, and I think it's a very not a very good change because till 2018, commercial importer was taxed under final tax regime, and the final tax regime means that you have no need to prepare or save any kind of documents with you, and documentation of economy was gravely avoided when you fall under final tax regime. इस चेंज के बाद ये हुआ कि फाइनेंस एक्ट 2018 ने ये प्रेजेंट किया कि इसको हम एफटीआर regime से उठा के नॉर्मल टैक्स regime में शिफ्ट कर देते हैं. उससे ये होगा कि एटलीस्ट कि जो आपका टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे डिडक्ट हो जाए वो मिनिमम टैक्स कंसीडर होगा और आपकी बकायदा असेसमेंट होगी. एंड इफ यू गेट मोर प्रॉफिट्स, आप बकायदा प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स पे करोगे इफ इट्स मोर देन द मिनिमम टैक्स पेड एट दिस इंपोर्ट स्टेज. ओके, फिर बाद में फाइनेंस एक्ट 2018 आया, उन्होंने कहा कि ठीक है मिनिमम टैक्स ठीक हो गया बिल्कुल, लेकिन जैसे ही हमारे पास सप्लीमेंट्री बजट आता है उसने इसको उठा के वापस दोबारा से फाइनल टैक्स रिजीम में डाल दिया. एंड आई थिंक इट्स नॉट अ गुड स्टेप क्योंकि हम 1992 से डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम पूरी तरह से कभी जा नहीं पाए, क्योंकि जब भी ऐसे सेक्टर का ऑडिट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही बात आ जाती है कि जी वी फॉल अंडर फाइनल टैक्स रिजीम एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड to prepare or keep any kind of documents with ourselves. तो इसकी वजह से जब वापस इनको एफटीआर में लेके आए तो इसका मतलब है कि हम फिर से डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी अवॉइड कर रहे हैं. एंड आई थिंक इट्स नॉट अ गुड स्टेप. आई थिंक आई नीड सम views from you, Mr. Umar, on this. Thank you very much, Yavar. This is actually a tricky area. Your point is valid that in terms of ease of doing business, if it's in the FTR regime, you have a certain area where you kind of feel facilitated. But the problem is, what's the biggest concern of the taxpayer with FTR? It's the lack of trust. We all know that. Why is that? Because there are certain subjective powers that the officers enjoy, and not only are they highly subjective, but the perception is, and obviously perception is based on people's experiences, that those powers are abused a lot. Now, the benefit with FTR was that one such power is audit or calendar records under 177. If someone falls under the FTR regime, that's done away with. They have no headache. There's a commercial importer, he's importing the good, no issue. They'll just pay the tax at the point of incidence when they are importing the goods, done away with it, assuming they are not doing any other business, at least with regard to that business. They have peace of mind, FPR won't call their records, they won't be audited. So they are mentally in a peaceful place, they can focus on their core business. Now, those who support the normal tax regime do argue that if they are also dealing with other areas and they are paying a higher incidence of taxes and they might end up having a refund and all that, so normal tax regime is good for that. However, with normal tax regime, those powers, especially audit and 177,
do come into effect. And they basically open that Pandora box that most of the businessmen are, how to put it, very careful about, or would rather avoid that. I'm sure Jabbar would have also experienced it. I've experienced it many times. Uh, there are just so many businessmen who just do not want any kind of headache. They are even prepared to pay a higher amount of tax if they can be assured that their time would not be wasted and no powers vested in the officers would be abused to harass them. So I see this in light of that, and I think it's a balancing act. It depends on which side of the argument you are leaning towards. Having seen all these things for a longer time and looking in a strategic perspective, I think this would overall be a good step for the commercial importer because till there is a complete overhaul of the taxation regimen in the current scenario, they'll perhaps in the end be better off doing away with those powers that we discussed, audit 177, etc., and just doing away by paying their full and final tax liability. Thank you, बट Yav. बट एक और चीज है उमर साहब, अगर अगर तो हम लोगों ने ये अभी स्टेप ना लिया तो उससे ये होगा कि हम तो लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हैं कि जी हमने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ अल्टीमेटली मूव करना है। अगर हम इसी चीज पे रहे कि नहीं वो जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते तो उनको उसकी आदत तो लग चुकी है आफ्टर 2 डेकेड से। तो इस आदत को कैसे छुड़ाया जाएगा फिर एकदम से जब हम उन्हें कहेंगे कि जी अब तो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, आपने ऑडिट करवाना है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी दिन तो स्टार्ट लेना ही पड़ेगा ना। तो व्हाई नॉट टुडे? Very good question. Yeah, but the way to do it is updating target market ones. See, for example, at the moment, the total filers that we have are under 15 lakh, 1.5 million. Out of those, how many are commercial imported? There Yeah, are no. almost 35 lakh people who have NTN, who already have NTN, but they are not filing their returns. There are 35 lakh people whose data is with NABLA who are not even applying for NTN. So you have those 70 lakh people. Why would you focus on 700, 7,000 people and not 70 lakh? There is a process how to do it. Second thing, it's all tied up with the reforms. Once we actually implement the reform, and I can share with you that there are certain proposals that are already being worked upon, and ACCA has also been a part of the process and is giving its input to the Finance Ministry, Taxation Committee, as well as the State Minister for Revenue, how to improve the systems and all that. But the thing is, once you have those processes and those changes implemented, then you can ask the people to now come and document. And even that should be enough. That should also be done in a phased manner. Let me give you the example of UK. I do remember during my time there was a tax policy change. So how they actually brought that change for one whole year, they kept on advertising that at various platforms to educate the people that this is the change that is going to happen. This is the change that is going to happen. Then after 1 year, they introduced the change and give the people all the businesses a time frame of almost 3 years that you have 3 years to prepare for that and it would be implemented in a phased manner. So the actual implementation was in 5 years, 1 plus 3 plus one whole year in which it was actually implemented. And by the end of fifth year, everyone was following that. If you just go and try to impose unnaturally, what would happen? There would be non-compliance. Businesses would not feel comfortable. So, Yeah. plus, we are also living in a country, we have to look at the ground facts. We are also living in a country where I've just shared with you, we have less than 0.5% of total population filing their tax return. We have almost 7 times the number of our filers who are not filing their tax return when they should be, and Yeah. we are not focusing on that. So you have to select you actually have to prioritize the issues and select the priority areas. So yeah, while I do agree with you, eventually we will even have to bring these people towards documentation, but that needs to be done in a phased manner and after we have addressed the most critical issues. So let's move on to the next one. Thank you. And I think the capacity we have is about 20 million
the 20 million people needs to file their return, and we are far, far away from this target. Okay, the next change is about filing. Inshallah, keep another session on the tax reforms and these things where you and I would love you to be on that session too. We'll discuss that in detail. But right now, we just have to really run through these Yeah. slides. Okay. The second, another change, it's about filing of withholding statement under section 165, and it's about 81A part 4 of second schedule. Presently, हो ये रहा है कि monthly statements जो है वो monthly withholding statements जो है वो monthly basis पे file की जाती है, और banking companies को भी ये required है कि उन्होंने profit on debt on cash withdrawal पे जो भी withholding की है उसको declare करना है एक statement के अंदर. Proposal ये दिया गया कि आपने विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जो है वो बाय एनुअली फाइल करनी है, और बैंकिंग कंपनीज को ये प्रपोज किया गया कि इम्यून कर दिया कि आपने कोई डिक्लेरेशन नहीं करनी रिगार्डिंग विदहोल्डिंग टैक्सेस ऑन प्रॉफिट ऑन डेट एंड कैश विड्रॉल. However, the bill also seeks, लेकिन एक पावर कमिश्नर को भी दे दिया to provide the power to commissioner to require a withholding tax agent to furnish a withholding tax statement for any period within a specified time. And I think it's ये change दोनों तरफ से ठीक है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि एक तरफ तो हम उनको 6 months के बर्डन में भी डाल रहे हैं, फिर ये है कि उनको मंथली टेंशन से भी निकाल रहे हैं, और एक और आइडिया ये भी होना चाहिए कि हम बिल्कुल मंथली स्टेटमेंट को अबॉलिश इसलिए कर दें क्योंकि हमारा जो आईआरएस सिस्टम जब आया था तो उसका मकसद ये था कि चालान आईआरएस से बने, ठीक है, और आईआरएस जैसे ही चालान बनाए ऑटोमेटिकली चीजों को कंपाइल करके एक जगह पे इकट्ठा कर ले. तो अगर हम उस तरफ मूव कर गए और हमारा चालान जो है पीएसआईडी की क्रिएशन जो है वो e.fbr से आईआरएस के मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाएगी, तो आई थिंक हम इस टेंशन से भी हमारा छुटकारा आसान हो जाएगा. तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स अ चेंज, पॉजिटिव चेंज. लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर व्हेन आईआरएस वुड बी फुली ऑपरेशनल. Okay, the next change is about the relaxation of restriction on registration of vehicle in case of non. Can I add something? Okay. Can I add something about the last step? Sure, The sir. problem with that is that the inherent view that we have for any good taxation system, and we actually recently discussed that at the Global Tax Forum that I was honored to be representing Pakistan as. You try to limit the subjective powers that you give to the officials, and you try to use the technology to automate the processes as much as you can. While I do appreciate that reducing the number of statements required does facilitate businesses, ease of doing business, lesser burden in terms of compliance. However, the problem is what they have done is they have given this power or proposed to give this power to the commissioner, which can be, looking at the fast track, used as a fishing tool. Then the commissioner would be asking, you have applied for a tax refund. They'll immediately ask you, okay, bring the withholding statements. Why? Right, Because, exactly. because you have applied for the tax refund. You know what I'm talking about. Exactly. So instead of that, I believe that it would have been rather better that they would have continued with the withholding statements, but automated that process. They have invested so heavily in the IRS, and IRS does have the capacity to incorporate these changes. So these withholding statements should have been incorporated, and all these statements, income tax return, withholding statement, sales tax return, should have been automatically tallied within the system to point out any discrepancy that was there. So for me, in my expert opinion, I think this is perhaps one of the changes which I believe is the least favorable over the longer term. While businesses immediately might be very excited, oh, brilliant, now we have to file fewer returns. But I can see the possible and the potential for problems here in future, especially with these subjective powers with the commissioner. So that is something that we have to keep in mind, and we'll be suggesting the government to reconsider this particular change and instead try to automate the process. They already have the capacity. They already have the system invested in that. Just try to automate that to facilitate the tax payment. Onward to you for 227C. Business can be brought by automation process. So it is the most important part. Okay, the next thing is about relaxation of restriction on registration of vehicles in the case of non-filer. Presently, an application for booking or purchase of a locally manufactured motor vehicle or application for first registration of an imported vehicle
shall not be accepted or processed by Vehicle Registration Authority of In Excise fact, and Taxation. I want to ask you on this one. Ji sir. If I can just very briefly tell everyone here, at the moment, if you want to buy a car, you need to be a filer. Okay. Exactly. The proposal is that in future, you can buy a car up to 1300 cc. Exactly. Before I give my comments, what's your opinion? How would this be for? There are two aspects to this. How would this be for the car industry, our local car assembling as well as import industry? Plus, how would this be for the tax point of view? From that point of view, what do you believe? आई थिंक जो हमारी इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो अगर हम इम्पोर्टेड व्हीकल के बारे में सोचें तो वो तो अभी भी उन्होंने अलाउ नहीं किया उसको, ठीक है। ओनली द लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल जो है खाली उनको अलाउ कर दिया कि आप जो है वो 1300 सीसी तक जो है वो कार परचेज करते हो विदाउट बीइंग अ फाइलर। जो पर्पस नजर आ रहा है यहाँ पे वो यही है कि आप जो है अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रहे हो, क्योंकि जो ज्यादातर हमारा जो पब्लिक है वो क्योंकि 1300 सीसी तक ही कार को परचेज कर रही होती है मोस्ट ऑफ द पीपल। तो उनका ये है कि जी कम से कम आपका जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल है वो आप लोग जो है परचेज करो, आपकी जो है वो इंटरनल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करे, रादर देन जो है आप अपने रिजर्व जो है वो कम करो, मनी बाहर ट्रांसफर करो। तो इस लिहाज से तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। लेकिन अब बिल्कुल ही अगर इसको हम रोक देंगे और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ये एक तरह से 1300 सीसी से जितने भी लोग ऊपर होंगे तो वो वही लोग हैं कि जिनको फाइलर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर 1300 सीसी तक जो लोग गाड़ियां लेते हैं वो टैक्स नेट में उनको आना भी चाहिए एक हद तक, एक लिमिट तक। लेकिन जो 1300 सीसी से ऊपर की जो आवाम, what is the price of the cheapest 1300 cc locally assembled car? या मे बी 1600,000, There you 1500,000। So you Yeah. are telling a guy who can buy a car worth 1600,000 may or may not be required to come in the tax net. Wouldn't you agree that they should certainly be in the tax net? If someone can afford a car worth 1600,000. No, if we go through the income tax ordinance, then I think in section 114, it's clearly written that a person having a vehicle having an engine capacity of more than 1000 cc, then he should be required to file a return. So there is a law. So there is already a law present, and I think the change is for the industry, because if you look into section 114, they have required us to file a return if you're having a car having engine capacity of more than 1000 cc. Then this change is only for the local industry, and I don't think so it has any other aspect than that. What do you say on it? Okay, that's a good perspective. I do agree with what you said. It's certainly aimed at promoting our local industry, and certainly it's a good step in that direction. Now, to make it a success, state machinery, especially the revenue machinery, FPR, would need to focus on actual implementation of the law. Why did 227C, why did this particular, provision came into play? Reason being that despite the law already in place, like you said, people were not complying. People were not applying for NT and people were not getting that. People were not filing the return. So the argument was there are some things which are necessary. For example, a person who wants to buy a car would then file the return and we would at least have their data and then they would be within the system. Now, this is a good step, but what this would require for it to be successful and not have a negative implication for the treasury would be to actually have the state machinery implementing the law, which technically is their responsibility. The problem is only that over years we have witnessed that they have capacity issues. They are not able to properly implement that. My only concern here is that previously anybody who was buying a car, because they wanted to buy a car, would go and get registered and become a filer. Now up to 1300cc, they don't need to do that. So what's the alternate? The alternate is that the state should actually be implementing the law. So if changes can be made in that respect, and that is properly done, hats off. This is a very good step. If not, then perhaps we would need to come back to this and see what was the cost benefit analysis. So I'll conclude by agreeing with you that overall this is a good step in the right direction with only the pinch of salt that I hope
that the actual implementation of the law that already exists can be made now, and we do not see the repeat of the capacity issues that we have been witnessing in the past. Yeah, you are right. And I think I've explained in the overview section that we are moving towards import substitution, and this may be for that step. Okay, moving on to next change. It's about the Directorate General of Transfer Pricing under Section 230. It's a very simple change. Section 230 was inserted in the Ordinance 2001 by Finance Act 2017, and it has empowered the new Directorate to conduct audit for transfer pricing at arm's length in transaction between associates, and this audit was to be separately performed independent of Section 177 214C of the Ordinance. So you see that if someone is already performing the audit of 177, if Commissioner 214C and maybe 214D in the past, and if they introduce another audit, then it would be very difficult for the taxpayer to perform all the audits with the efficiency and effectiveness, and even for the Commissioner to perform all the audits with efficiency and effectiveness. So it is proposed to abolish this provision, and taxpayer has saved from unnecessary compliances. Okay, moving on to the next change. I think, Mr. Umar, I want you to go through that. I will, but let's take a break here. We'll quickly take some questions because a few questions have been lined up. So let's take questions first. Yeah, Let's do from downwards. Okay. Or let's just start from the beginning. It would make sense. Voice flag. Okay. So the first question we have is from Mr. Waleed Fiaz. He's saying, sir, I have a question. We are not deducting withholding tax of commercial importer because they are paying tax on the port. That's why they are exempted from withholding tax under current finance bill. Can we deduct withholding tax of commercial importer now? Would you like to answer that, Yavar? Yeah, sure. एक चीज याद रखना, एफटीआर regime जो है मिस्टर वलीद, एफटीआर regime का मकसद ये है कि ये फुल एंड फाइनल जो है टैक्स होंगे आपको, and you have no need to pay any more tax with the return. हाँ, अगर आपसे रिडक्शन कम हुई है 5.5% के हिसाब से होनी चाहिए थी, कम होगी है, फिर आपने रिटर्न के साथ पे करना होता है. जहां तक विदहोल्डिंग का सवाल है, तो फाइनल टैक्स regime वालों ने बेशक टैक्स तो पे नहीं करना मजीद, लेकिन फॉर दिस दे हैव टू प्रोड्यूस द एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट. तो जब हम उसको दोबारा से एफटीआर में लेके आ गए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विदहोल्डिंग हमें उनसे नहीं करनी, लेकिन तब नहीं करनी जब वो आपको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 159 रीड विद सेक्शन 153(1)A प्रोड्यूस करके दे दे. उसके बाद आप बिल्कुल ठीक है, आप इसी तरह जाएंगे. यू हैव नो नीड टू विदहोल्ड एनी अमाउंट फ्रॉम दैट टैक्स. Okay, thank you. Just one clarification I would like to make, Waleed. At the moment, the finance bill is basically just a proposal. Once it will be approved and enacted as an act of the parliament, then you'll follow that. Till that time, you have to follow the existing laws and regulations. So next question is by Mr. Amiruddin and Amiruddin and Amiruddin Bana. So I'm supposing either they are two guys or one guy with a long name. Okay, fair enough. Without naming, can we please discuss the benefits one should get if they now declare their offshore assets? Okay, I'd address that. I think you would definitely have heard about the OECD agreement, Organization of Economic Cooperation and Development. What's happening is that the demographics of the tax arena globally has changed. The laws have changed. Various jurisdictions are now collaborating. Tax avoidance has become harder. So one of the biggest benefit would be that not only would you be doing the legal compliance, but you'll be able to create a legal trail of your money. So this should also help you in the offshore location. And most of these countries either already have or are in the process of doing mutual taxation agreements, which mean they are trying to avoid double taxation. So even you wouldn't end up losing on that front. One of the key area of concerns for overseas Pakistanis or people who have assets abroad, that if we declare, would we be taxed here or abroad?
it won't be like that. So not only would you be fully in legal compliance, you'll be able to create a legal trail. You wouldn't be taxed twice. For example, in Pakistan at the moment, you have to declare your offshore assets. But if they are created from the sources of income which are offshore, you are not paying any tax on that. But you have to declare that so that a money trail can be created. So for example, if someone's assets are based in US and they have like maybe a business in the US from which they are getting some savings and income and are creating those assets. So they have to declare that in their tax return in Pakistan, but they won't be taxed on that, and vice versa. If they have a business in Pakistan and they have assets that are being generated from Pakistan sourced income, they'll have to declare that in the US too. So Yasser, I have the next question for you. I hope Amir Saab that answers you. The next question is by Mr. Nadeem Anwar. He's saying, I think the only purpose of allowing non-filers to buy vehicle is simply to collect maximum taxes from filers. So sorry. Okay, I'll repeat the question. Mr. Nadeem Anwar is saying, I think the only purpose of allowing non-filer to buy vehicle is to collect maximum taxes from filers. I think he's sharing his opinion. He's not, it's not a query. It's just his opinion. And I think what he's trying to say, Yavor, is that the purpose? Is the no, government doing that so no, that they no, can filers the most? no. I don't think so that this is the purpose. Even they have allowed the non-filers to buy the vehicle, then how can they take more tax than the filer? It should not be. It must not be the purpose of the change. And if this is just a suggestion or just a discussion, then I don't agree with you or to your statement. Thank you, Yavor. The next question is by Mr. Usman Khan, who said for a 1300cc car, why locally manufactured only? I think that has already been discussed during the presentation. Why locally? Because the government is trying to promote the local industry, reduce the trade deficit, reduce the burden that's created when we import items from abroad. So all these reasons together. Next one is by Nasir Ahmed. It says you are muted. Okay, that's just the issue with voice rating. Okay, Nasir Khattak Saab is saying, greetings. What effect does presenting 2-3 finance bills in a year have would have on the economy overall and especially on investors? Would you like to answer that, Yavan? Yeah. So what was the name of the person who's Nasir. asking? ओके मिस्टर नासिर साहब देखिए हमने स्टार्ट में ये डिस्कस कर लिया था कि दिस इज नॉट बजट यू कैन नॉट कॉल इट अ बजट आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच गिव्स डायरेक्शन टू आवर इकोनॉमी क्योंकि जब न्यू गवर्नमेंट आई और उसने देखा कि ये चेंजेस जरूरी है एंड आई थिंक मिस्टर उमर Yeah, he has used the term finance bills. He hasn't used the term budget. ओके फाइनेंस बिल्स एग्जैक्टली तो दिस ये बिल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बिल इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं है कि जी हम लोग किसी तरह से डिटर कर रहे हैं ठीक है पब्लिक को या टैक्स पेयर्स को कि देखिए हमें तो काम ही नहीं करना आता या फिर हम समझ नहीं रहे चीजों बल्कि वो आए उन्होंने मीटिंग्स की डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स के पास गए डिफरेंट टैक्स पेयर्स के पास गए उनके साथ इशू डिस्कस किए उसके बाद उन लोगों ने उस चीज को प्रेजेंट किया कि आई थिंक ये चीजें होनी चाहिए लाजमी है और अभी से ही होनी चाहिए रादर देन कि हम नेक्स्ट ईयर का वेट करें और जून में दोबारा से एक फाइनेंस बिल प्रेजेंट करें. Okay, the next question is from Nadeem Anwar. He has clarified, he's saying, sorry, I meant to collect maximum tax from non-filer. It's with regard to the vehicle. No, Nadeem, I do not think they have made this change only to collect maximum taxes from non-filers, because for that they would have simply increased the rate of taxes. It's more in line with the policy, stated policy of the government to promote local industries, ease of doing business, reduce the trade deficit. Next one is for you, Yawar. It's by Sajawal Latif. Is non-filer purchase of new vehicle from today or after 1st July 2019? I think it was already answered, but Yawar? जी sir. Yawar is asking ये non-filer change है today या 1st July 2019? About the 1300cc.
जी ये तो अभी अभी उमर साहब ने कहा कि एक दफा ये एक्ट जो है, एक्ट के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि इट विल कम वंस इन ऑल, लेकिन बात ये है कि जब ये एक्ट बनेगा, बिल जब एक्ट बनेगा तो उसके बाद ही हमें फाइनल पोजीशन उसकी समझ आएगी। और आई थिंक ये चेंज जो है बिल्कुल आज से ही, जिस दिन से ये एक्ट बन जाएगा उसी दिन से एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स नॉट गेटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1st July, and the day it will become the act, you can purchase the 1300cc vehicle without being a filer. Okay, let's go back to the presentation. You very kindly asked me to go through this one, Advanced Tax on Stock Exchange Transactions, Section 233A. This is something that has been really lobbied for and advocated by stock exchange and investors a lot. At the moment, Pakistan Stock Exchange is required to collect advance tax from the members on the purchase and sale value of the shares. However, that is adjustable. The proposal is to do away with this law so that the taxation can take a different route. They are both again, there are two sets of argument. One is the tax is adjustable, what's the problem, let it be, and then they can simply adjust, whoever is concerned can simply adjust in the tax return. The other argument is at present we know the process about refund is practically so cumbersome that hardly anyone is able to get refunds. Although you can always refer them to me, especially you, Yawa, if you have a problem with refund, please. But due to that argument, and also in line with the ease of doing business concept, which this government is propagating a lot, it was argued to do away with this and create some other sort of taxation mechanism. So that proposal has been accepted by the government. Again, we'll have to see what alternate is finalized and in what shape before we can actually comment overall whether this is a good step or not. But per se, the direction is right, the aim is right, promoting ease of doing business and supporting our stock exchange is right. So overall, it does seem like a good step in the right direction. Over to you, Yavar. ओके ओके, तो ये सेक्शन जैसे ही 233 एबॉलिश हो जाएगा तो मेरा ख्याल से उमर साहब 233 इन एक्शन आ जाएगा, और फिर जो है सिर्फ कमीशन इनकम के ऊपर उनकी जो है वो टैक्स जो है सिर्फ जो एक कमीशन का पोर्शन होता है सिर्फ उसके ऊपर टैक्स विद होल्डिंग होगी, क्योंकि 233 ए जो है वो सेल और परचेज वैल्यू दोनों के ऊपर एक फुल वैल्यू के ऊपर टैक्स जो है वो कर रहा था। तो उस लिहाज से जो है वो इसके बाद 233 सेक्शन इन फोर्स आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट चेंज इज अबाउट द फर्स्ट स्केड्यूल इन द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। फर्स्ट स्केड्यूल में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले डिफरेंट सेशंस में कि फर्स्ट स्केड्यूल इज अबाउट रेट्स। जितने भी रेट्स हैं हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो चेंज हमारे सामने आता है वो सुपर टैक्स की फॉर्म में आता है। Presently, the super tax is chargeable to banking companies for tax year 2018 at the rate 0%, and for 2019 to 21 at the rate 4, 3, and 2% respectively. And for the other than banking company, the rates are from 2018 to 21 are 3%, 2, 1, and 0% respectively. It is proposed that for banking companies to keep the constant rate of super tax 4% from 2018 to 2021, एक constant rate उन्होंने दे दिया। और फॉर नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए रेट जो है 2020 में जो कि 1% हो जाना था और अल्टीमेटली 2021 में एबॉलिश हो जाना था, उसको एक साल पहले ही एबॉलिश कर दिया गया। 2 के बाद वो डायरेक्ट जंप करके जाएगा 0% पे। और फॉर बैंकिंग कंपनीज, क्योंकि एक तरह से ये एनोमली भी थी कि 2018 में 0% और उसके बाद जो है वो डिफरेंट रेट्स आ रहे थे, तो उस एनोमली को भी एक तरह से खत्म किया गया और सारे ईयर्स के लिए जो है वो 4% जो है उसको कर दिया गया। Okay, moving on to the next change. If we can just take a second. Sure. जो हमने बात की है about that 233. What I was referring to is the question that still hangs is whether the government will make any further amendment to tax the purchase and sales value. I mean, the biggest argument has been that FPR has been a proponent of taxing these values. Not just the commission only, because they say in many countries it's been done like that. We don't have a documented economy, so this is a mechanism to tax. There are a whole lot of arguments they use to support that. So the question is whether this would be left as it is, and as you mentioned, revert back to 233, where only the commissions would be taxed, or there would be any further change where different mechanism would be introduced to tax the purchase and sale value. Number one. Number two, I don't think so.
with regard to this super tax change, it is interesting if you have a look. While the change has been done with regard to these banking companies, that it would be a flat 4% till 2021, and for non-banking companies, it's a very good step. The rate is reduced to 0% from 1%, because if we all remember, certainly all the professional remembers, super tax was initially promised to be introduced for 1 year, basically to support the IDPs, and then it was extended to the next year, and then the next year. So that also create confidence issues, that you have told the businesses there is a national emergency, it's for 1 year, and then in order to meet your targets, in order to meet department's target, that's been used as a cash cow. So this is certainly a good step in the right direction, but perhaps it would have been better if similar view would have been taken for the banking companies, especially now that in terms of ease of doing business, the government also wants to promote the banks and support them so that more finances are available for the businesses. They can use that. But something is better than nothing. So certainly this is a good step in the right direction, and could have been better in terms of the banking companies. But nevertheless, long-standing demand of the businesses has been met. And since it's not being extended beyond 2021, so I'm sure even the banking companies would be happy about that. What do you say? Mr. Umar, there is another question that as 2018 return has already been filed, how are they going to recover that 4% from the taxpayers? Assessment has already been made. Yeah, that's a very good question. The thing is this, Yawar, there are many judgments. I can see this thing ending up in a court of law. Because while technically, if the parliament approves and it becomes an act, then they can go retrospectively. But there are also many judgments of the superior courts where the courts have laid down that you cannot penalize retrospectively the Exactly. taxpayer. So there is a conflict here, and if certain banks would like to, and I do know a couple of banks who are very active in this arena, so we might see this ending up in a court of law. How they could do that? It's very simple. If nobody challenges this and this goes through, they'll simply make an adjustment in the next assessment. Yeah, maybe the commissioner would issue section 122(5)(a) notice as the return is erroneous and prejudicial. They'll probably not even do that. I mean, practically what they do, you already know that, yeah, but they'll simply call up the representative of the bank that, there's this much difference, so please account for and pay this in the advance taxes. They wouldn't even wait for the year to end. They'll probably get that in the advance taxes to meet their targets. Yes, exactly. Good question, Okay. Yawar. Let's move forward. Next, it's about advance tax on import of mobile phones. The bill seeks to provide for collection of advance tax on the mobile phones imported into Pakistan. ठीक है, ये इन्होंने डिफरेंट हमें यूएस डॉलर्स के हिसाब से जो है वो रेट्स बता दिए कि आपने अगर अप टू 30 यूएस डॉलर होगा तो इतना टैक्सेस जो है वो इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स के ऊपर कलेक्ट होंगे. तो अगेन इंपोर्टेड अगर मोबाइल फोन्स के ऊपर आप मजीद इतने वो दे रहे होंगे, अमाउंट पे कर रहे होंगे, तो इट्स आई थिंक डेटरेंस काइंड ऑफ फॉर import substitution, again कि आप जो है वो imports जो है वो reduce कर सकें. Okay, the next change is about the advance tax on cash withdrawal and banking transaction. I think it's the best positive change in this bill. Presently, 0.3% tax is to be collected by bank on cash withdrawal or any banking transaction by filer, and it is proposed that such collection is to be abolished. और सबसे बड़ा जो लास्ट टाइम मेरी सजीद साहब के साथ भी मुलाकात हुई थी, and I was discussing this thing with him कि what benefit filer is getting from filing his return. तो एक तरह से ये उन्होंने बेनिफिट दे दिया कि अगर आप फाइलर होंगे, ये तो एक तरह से इसको अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट में देखें तो यही है कि एक चीज हम पे लगा दी गलत और उसको विड्रॉ कर लिया, तो दिस कैन नेवर बी कंसीडर्ड एज अ बेनिफिट. बट ये बड़ा मुश्किल होता है कि हमारी गवर्नमेंट किसी गलत चीज को भी विड्रॉ कर ले. तो आई थिंक इट्स अ वेरी मच पॉजिटिव स्टेप, और एक तरह से जो है फाइलर को ये बेनिफिट हो गया, उसको इस ट्रांजैक्शन की मूवमेंट पे अब और कैश विड्रॉल पे फिक्र नहीं होगी कि हमसे इतना टैक्स विदहेल्ड हो जाना है. इस प्रपोजल के लिए आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज ना सिर्फ एसीसी के प्लेटफॉर्म से, बट पर्सनली ऑन alternate avenues where I am, we and I really push this, and alhamdulillah it went through. Reason being कि जो existing regime थी उसमें while there was a difference of 100% tax rate,
कि अगर आप फाइलर हैं तो आपका 100% रिडक्शन है, नॉन फाइलर का 100% ज्यादा है, आपका एडजस्टेबल है. बट स्टिल द रिजल्ट वाज दैट बिकॉज पीपल आर सो अफ्रेड ऑफ द हैरेसमेंट, पोटेंशियल हैरेसमेंट, ऑल्टरनेट बैंकिंग क्रिएट हो गई थी. मीन लाहौर कराची की मार्केट्स में, लेट मी शेयर विद यू गाइस, पर्ची सिस्टम स्टार्ट हो गया था. करोड़ों का लेन देन इंस्टेड ऑफ बैंकिंग एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम क्रिएट हो गया था जहां पे परचेज पे हो रहा था. एंड दैट वाज एक्चुअली इम्पैक्टिंग द मनी सप्लाई इन द मार्केट एंड द बैंकिंग ऑपरेशंस. सो दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. प्लस इट्स सर्टेनली मोटिवेटिंग द फाइलर्स, जैसे यावर ने भी कहा कि आपको एक ज्यादा एडिशनल सब्सटेंटिव बेनिफिट नजर आ रहे हैं. बट इवन मोर देन दैट, what is closest to my heart is it's more business friendly for ease of doing business. कि businesses का एक ट्रस्ट आ रहा है, दोबारा वो बैंकिंग की तरफ जाएंगे और बैंक्स के लिए जब वो सरमाया आएगा वो दोबारा उसको मार्केट में सर्कुलेट करेंगे. सो ऑल इन ऑल वी कैन एग्री ऑन दैट, अ वेरी गुड स्टेप. थैंक यू सो मच. ओके, एक और चेंज छोटा सा हमने ये भी देखा. इट इज आल्सो प्रपोज्ड टू इंसेंटिवाइज फॉरेन रेमिटेंस बाय ओवरसीज पाकिस्तानी that advance tax on cash withdrawal on accounts solely fed by foreign remittance has been exempted. कि अगर आपके पास अकाउंट है और उसमें से फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हैं तो उस पे भी आपसे बिल्कुल जो है वो withholding नहीं की जाएगी. It's also again a positive and a brilliant change. Okay, moving to the next slide. It's about advance tax on private motor vehicle. The bill seeks to increase the withholding taxes under Section 231. Let's see that यावर, ये तो just rates increase हुए हैं. बिल्कुल. ओके, ये आई थिंक वो जो कह रहे थे ना, एक साहब ने क्वेश्चन किया था कि जी नॉन फाइलर, आई थिंक ये स्लाइड है कि जो कहती है कि नॉन फाइलर से अगर ज्यादा टैक्स लेना होता तो ये स्टेप लिया जाता. ओके, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो फंक्शन एंड गैदरिंग पे भी है. इसमें पहले 20,000 टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता था, अब वो भी रिड्यूस करके 5,000 कर दिया. अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ के एंगल से इसको अगर हम देखें तो ये हमें पॉजिटिव चेंज नजर ये आएगा. मैंने आपसे ना तकरीबन 3 महीने पहले एक टीवी प्रोग्राम में बताया था, जब ये हुआ था ना शादी हॉल्स का, और आपको याद होगा मीडिया ने चलाया था कि शादियों पे टैक्स लगा दिया और शादियों पे टैक्स लगा दिया. इवन आई रिमेंबर मेरे पे बात भी हुई थी ऑन अ लाइटर नोट. मैंने ये उस वक्त बताया था कि जी ये डिस्कस हो रहा है, और जो वाकई जेन्युइन है, जो छोटे शादी हॉल होंगे या जो अपने घरों में कर रहे होंगे, उसमें उनको रिलीफ मिलेगा, मिनिमम लेवल पे आएगा और इरेडिकेट होगा. तो अगेन दिस इज इन लाइन विद कॉन्सेप्चुअलाइजिंग एंड रैशनलाइजिंग द टैक्स रिजीम, जहां पे जिस पे जितना एप्लीकेबल है उतना हम करें. सो ऑनवर्ड्स टू सेकंड शेड्यूल. सेकंड स्केड्यूल जिसमें हमें एग्जाम्पशंस नजर आती है, तो देखते हैं हमें किस किस चीज को प्रपोज किया एग्जाम्पशन के लिए. एक सोलर एनर्जी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की इनकम को जो है वो एग्जाम कर लिया. दिस क्लॉज कंटेन्स अ 5-year exemption with respect to income generated by an industrial undertaking being manufacture of plant, machinery, equipment and items dedicated for generation of renewable energy like solar and wind. This clause restrict this exemption. या मेन जो क्या है वो तो मेन डिफरेंस यही आया है कि पहले ये रिस्ट्रिक्ट था कि 31 दिसंबर 2016 से पहले जो गवर्नमेंट ने कर दी है लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, दे हैव गिवन दिस टाइम पीरियड फ्रॉम 1 मार्च 19 टू 30 जून 2020. रेस्ट इज सिंपल, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. बाकी ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इन ग्रुप कंपनीज. The bill seeks to reduce the tax on dividend income in case of companies availing the benefit of group relief under Section 59B. The reduction in tax on dividend will be proportionately to the percentage of ordinary shareholding of the recipient in the distribution company. अब इसमें ये एक तरह से इन्होंने स्टेप लिया है कि जी आपकी जो डिविडेंड होंगे, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड होंगे, उसको काइंड ऑफ रिलीफ दे दिया. लेकिन 2016 से पहले ये डिविडेंड बिल्कुल एग्जेम्प्ट था, और 2016 में एक रिग्रेसिव टैक्स स्टेप लिया गया और इस बिल ने आके उस स्टेप को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया. लेकिन आई थिंक ये ज्यादा बेटर होता कि अगर पुरानी पोजीशन वापस जो है वो बहाल कर दी जाती, कि रादर देन कि हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं अमाउंट को, हमें चाहिए था कि बिल्कुल एबॉलिश कर देना चाहिए था इस टैक्स को. आप क्या कहेंगे उमर साहब इस पे? देखिए अगेन यावर, this is again one of those areas जहाँ पे दोनों आर्ग्यूमेंट मौजूद है. The problem has been कि intercorporate dividends पे अगर वैसे तो आप बिजनेस की बात करें, I totally agree. Intercorporate dividend पे क्या तो बनती है कि आप टैक्स काटें. Basically ग्रुप कंपनी का उसमें कह रही है ना, ease of doing business. The problem with our system is कि again जो loopholes manipulate होते हैं, and because state machinery की अभी वो capacity नहीं है कि वो implement करे,
तो फिर इस तरह के लॉज इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। अब उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो हम उर्दू में कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है, कि द इनोसेंट वन हु आर नॉट एट फॉल्ट आल्सो एंड अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ. So again, यहाँ पे it's a good step, but the question would be whether the FPR would be able to resolve their capacity issue and ensure that this would not be manipulated. If they can do that, nothing better. Even the remaining one should be abolished as well, because practically it won't make any sense. It's only the ground realities that end up creating these complications. आई थिंक कैपेसिटी इश्यू के साथ हमें ट्रस्ट इश्यूज भी हो गए एफबीआर को। अब टैक्स पेयर पे ट्रस्ट करना होगा तभी कोई ऐसा चेंज हम ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा भी लूप होल को कि बिल्कुल ही इस जगह को हमने नहीं छोड़ना, तो ट्रस्ट भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एस्टैब्लिश। ओके, द नेक्स्ट चेंज इज अबाउट द इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन। कैपेसिटी इशू से हमारी मुराद क्या है? कैपेसिटी इशू से मुराद है एफपीआर की इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी। बिल्कुल चेंज इंट्रोड्यूस हुआ था, आपने हमने कई प्रैक्टिशनर्स ने कहा था ये आप क्यों कह रहे हैं, उस वक्त उनकी आर्गुमेंट क्या थी कि प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कॉन्ग्लोमरेट्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी फिशेस हैं, वो इनको यूज कर रही हैं टू ट्रांसफर मनी एंड इट्स बीन क्रिएटेड अ वेब टू अवॉइड टैक्सेशन। एग्जैक्टली हमारी आर्ग्यूमेंट होती थी तो फिर आपके पास ऑडिट पावर्स हैं, आपके पास बाकी पावर्स हैं, आप उनको चेक करें, लेकिन वहां पे उनकी कैपेसिटी इशू थी कि वो उसको प्रॉपर्ली चेक नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, अब लॉजिकली तो ये होना चाहिए आप अपनी कैपेसिटी में इन्वेस्ट करें रेदर देन आप इस तरह के लॉस लाइन। दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिंगिंग दिस अमेंडमेंट। सो आई एग्री इन दैट वे कि कैपेसिटी में इंप्लीमेंट करें, उसके बाद इस तरह के कानून की जरूरत नहीं रहेगी, फिर इसको अबॉलिश करें ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो, बिजनेसेस हमारे मुल्क में आए और फर्दर ग्रो करें। आई एग्री। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 236 से। यस आई थिंक हम सारे इसको बड़ा पसंद करेंगे, पीएसएल एंड ऑल। जी बिल्कुल इसी तरह है। प्लीज कैरी ऑन विद दिस स्लाइड। नहीं, गो अहेड प्लीज। Okay. Okay. The bill seeks to absolve from application of Section 236A with respect to the auction of franchise rights of participating teams in a national or international leagues organized by any board or other organization established by the government of Pakistan for the purpose of controlling, regulating, or encouraging major games and sports with effect from July 1st, 2019. इससे benefit किसको होगा? Is likely to trigger investment in Pakistan Super League and similar events। इस चीज को जो है वो बेनिफिट देने के लिए, ताकि ये लीग जो है वो ज्यादा से ज्यादा आए, उसमें राइट्स जो है वो इस तरह से मूव हो और एक उनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो सके। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट टू प्रमोट स्पोर्ट्स, जो कि काफी नेग्लेक्टेड रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में। तो इट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, स्पेशली केपीके का अगर मैं कहूँ यहाँ से, तो स्पोर्ट्स में काफी काम हुआ है, हमें काफी चीजें देखने को मिली है, और ओवरऑल जो है ये आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। ट्रू, एग्री। Okay, next thing is about reduced rate for additional advances। ये एक न्यू चेंज जो इन्होंने हमें प्रेजेंट किया, कि अभी हमें पता है कि एग्जिस्टिंग रिजीम में जितनी बैंकिंग कंपनीज हैं, इट इज सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स ऑफ 35%। What has been proposed? It is now proposed that income from advances to the following will be subject to reduced rate of 20% for that tax for tax year 2020 to 2023, only from the income which has been raised from the advances to micro and small enterprises, low-cost housing finance, and farm credit. The above concessional rate is available on additional advances, which term has been defined as the advances in addition to average amount of advances to the above sector for tax year 2019. अगर इसको मैं इस अंदाज में तो I think यहाँ पे जो हमारा एसएमई सेक्टर है उसके लिए फाइनेंसेस को प्रमोट किया जा रहा है, बैंक्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि वो माइक्रो एसएमई सेक्टर और फार्मिंग सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दे। टैक्स इंसेंटिवाइज किए कि अगर इन सेक्टर्स को बैंक लेंडिंग करेगा तो इमीडिएटली 15% तो सेविंग उसको टैक्स कॉस्ट में हो गई। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती थी कि व्हेनेवर गवर्नमेंट्स वुड गो टू द बैंक्स एंड से कि आप क्यों नहीं इन सेक्टर्स को कह रहे, तो एक तो वो कहते थे जी हम कह रहे हैं, दूसरा वो कहते थे जी हमारे यहाँ पे मार्जिन्स कम है या रिकवरी रेट्स कम है। तो ये एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड स्टेप जहां पे उनको इंसेंटिवाइज किया गया है कि अच्छा आपको ये एक हैवी रिडक्शन होगी, 15% इन रिडक्शन इन टैक्स इज अ मेजर रिडक्शन, इट्स अ मेजर इंसेंटिव। अगर आप इन सेक्टर्स को आके
अपने फंडिंग देते हैं, इनको लेंडिंग करते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा कि ये सेक्टर्स जब ग्रो करेंगे, इकोनॉमी का हमारा एक क्रिटिकल एरिया है फार्मिंग, एग्रीकल्चर और एसएमई, इन दोनों सेक्टर्स में जितनी ग्रोथ होगी हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। द लार्जर द केक, द लार्जर द पाई फॉर एवरीवन। व्हाट डू यू से यावर? अच्छा सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर एस्पेक्ट से ठीक है, लेकिन एक चीज जो मुझे इसमें अजीब सी लगी कि व्हाई दे हैव मेंशन्ड द वर्ड एडिशनल एडवांसेस, व्हाई नॉट ओनली एडवांसेस? मतलब अगर आपने उनको फैसिलिटेट करना ही था तो जो वो दे रहे हैं अभी खाली आप एडवांसेस भी लिख देते, तो इसका मतलब है कि अगर समवन इज गिविंग 100 रुपीज, अगर वो उससे ऊपर जाएगा तभी उसको बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे ये थोड़ा सा वजह ये है, उसकी वजह ये है कि वो लेवल तो बैंक्स ऑलरेडी जो है जस्टिफाई करते हैं ना। फॉर बिल्कुल एग्जांपल, आई हैव बीन इन अ फ्यू मीटिंग्स, अब मैं नेम नहीं लूंगा, हमारे पब्लिक सेक्टर का लार्जेस्ट बैंक है, उन्होंने जी फैक्ट फिगर रखी कि जी हम एक्स परसेंटेज ऑलरेडी फार्म्स को लैंड कर रहे हैं। द गवर्नमेंट वाज पुशिंग कि आप इससे आगे जाएं, वो उससे आगे जाने पे तैयार नहीं थे। वो कहते थे नहीं, बस हम ऑलरेडी इतनी कह रहे हैं, इतना हमारा डूब जाता है, कभी फ्लडिंग हो जाती है, कभी ये हो जाता है, और इसमें हमारे मार्जिन्स कम है। सो बेसिकली उनको इंसेंटिवाइज किया गया है कि वो लेवल, और वो लेवल वो ओवर पास्ट सेवरल इयर्स मेंटेन कर रहे हैं। इट हैज ठीक है। बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस मॉडल। तो उनको इंसेंटिवाइज किया गया है कि उस लेवल से आगे आप जाए। एग्जैक्टली। ये एडिशनल एडवांस का होल पर्पस यही है कि अब आप उस थ्रेशोल्ड को ब्रेक करें जिस पे आप कई साल से ब्रेक्स लगा के खड़े हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, आई थिंक वी आर डन विद इनकम टैक्स एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेल्स टैक्स proposals And whatever given. we need to shift into fourth year now. Fifth का भी वक्त नहीं आया। अच्छा ओके, Why not we take a quick break and just catch up on the questions quickly? या श्योर अगर श्योर श्योर। first section, okay. अरुण साहब, आपने कोई फ्लैग किया ऑलरेडी? नहीं, वही अब फ्लैग से आगे चलते जाइए। Okay. एक दो क्वेश्चंस बीच में कमेंट्स हैं, बाकी सारे क्वेश्चन। So let's start with this flag form. Okay, Usman Khan is asking why non-banking companies to pay super tax at 0% from 2020 and not before 2020. जी यावर साहब, ये इनका क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछिए, हमारा कहीं भी। आई थिंक गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने सोचा कि यार अब हम दे ही रहे हैं तो जितना आ रहा है उसको तो ले ले, एक साल छोड़ देते हैं, ठीक हो गया, ताकि कुछ नजर भी आए कि बेनिफिट हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल इसको नहीं छोड़ सकती क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू अ क्रिटिकल टाइम और उनको जो है कुछ इनफ्लो की जरूरत भी है। तो बिल्कुल अगर वो जीरो कर देते तो उनके लिए इस लिहाज से भी वो प्रॉब्लमेटिक बन सकता था। दूसरा इसमें आई ऐड, इसमें एक और एस्पेक्ट भी होती है। देखिए, टैक्स ईयर हमारा क्या होता है? टैक्स ईयर आप सबको पता ही होगा, फॉर दोज हु डोंट नो, इज द टर्म वेयर योर टैक्स ईयर इज एंडिंग। सो टैक्स ईयर 2020 would end when? यावर? जी जी बिल्कुल, 2020 would end on 30th June 2020 and 2021 would end on 30th June आज हमारी 2021। क्या डेट चल रही है? February 2019। ठीक है, बिल्कुल सर। we are near the end of 2019. It's only 4 months left. It wouldn't make any sense to introduce it now. Why? आपको issues हो जाएंगे, bifurcations, complexities and all that. एक डेढ़ माह दो माह आपके वैसे ही बिल पास होने में लग जाना है, पीछे आपके एक दो माह रह जाएंगे, उसके लिए इंट्रोड्यूस करना doesn't make much sense. So the best logical way to introduce such changes from the start of next tax year. So come July onwards, welcome to the new world. Okay, Exactly. next question. Okay, next question. Mohammed Yusuf is asking that hoodie system, I think he means hundi system, has Yeah. also been controlled by concerned authorities. Yes, Yusuf. Mohammed Nadeem is asking, sir, whether withholding tax upon foreign payments has been abolished or not, such as for ACCA fee payment. Yavar? ACCA फी पेमेंट के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्सेस की अगर हम बात करें तो वो विदहोल्डिंग टैक्सेस तो हम लोग करते ही नहीं है क्योंकि वी आर नॉट विदहोल्डिंग एजेंट्स, बीइंग इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी वी आर नॉट विदहोल्डिंग एजेंट्स। ठीक है, और अगर आप और किसी और इनकम की बात करें जो हमने फॉरेन नॉन रेजिडेंट को पे करनी हो
तो उसमें हमारे पास सेक्शन 152 है, डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, सेक्शन 101 है। हमें डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है इन ऑर्डर टू चेक वेदर टू विदहेल्ड द अमाउंट और नॉट टू विदहेल्ड द अमाउंट। एंड जहां तक ACCA का सवाल है, तो उसके लिए आपको पहले विदहोल्डिंग एजेंट बनना पड़ेगा, तब आप जाके विदहोल्डिंग करेंगे। एंड बीइंग इंडिविजुअल कैपेसिटी वी आर नॉट विदहोल्डिंग एजेंट्स। I think what he was trying to ask is कि when we make the payment, तो जैसे अगर हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करें तो उसमें वो टैक्स डिडक्ट हो जाता है विद होल्डिंग का। अगर हम ड्राफ्ट बनवाने जा रहे हैं तो बैंक वो विद होल्ड कर लेता है। So he was probably asking in the other direction कि we Asking go, about, so yeah, that's on transaction. and it makes sense. I mean, government at the moment has an argument कि अगर कोई ये अफोर्ड कर सकता है इतनी पेमेंट, तो वो उसके ऊपर ये थोड़ी सी पेमेंट भी अफोर्ड कर सकता है। Next one is by Nabil Ibrahim. Appreciate if you can send the video at the conclusion of the session. Nabil, as a norm, all these sessions are uploaded on ACCA's YouTube channel. So you would be able to see that hopefully after a week. Muhammad Saqib Ali Rashidi. So that's a big question. Um, I'll pass this on. If tax collection on cash withdrawal from filer is abolished, isn't it encouragement to the companies to make huge cash transactions, and through this way they may make huge unofficial transactions on cash? Companies unofficial, as FPR could only be knowing for cash transaction by grossing up tax collection of 0.3%. Now there is no tax shown in the return. Saqib Saab, you have some serious issues in understanding, but this question is onwards to Yawar. ओके सर, इन्होंने जो एंड में बात की है ना 0.3% के ग्रॉस अप की, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि हम सिंपल जो मेरे से विदहोल्डिंग हुई हो या मैंने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर की हुई हो और मैं उसको ग्रॉस अप करूं और उससे कोई भी असेसमेंट कर लूं। इट्स नॉट पॉसिबल। हजार चीजें होती हैं, हजार पर्पस के लिए कैश निकालना पड़ता है। बल्कि उमर साहब आप मेरे साथ एग्री करेंगे, आजकल तो जो बैंक्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो अटैचमेंट से पहले हम क्लाइंट को एडवाइस दे देते हैं कि यार प्लीज अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लो, ठीक है। अब अगर उसमें टैक्स कट गया But Yawar, what he has said is a different thing. इन्होंने ये एक आर्ग्यूमेंट ली है, वो कहते हैं एफपीआर को सिर्फ पता ही तब चलता है कि किसी शख्स ने या कंपनी ने कितनी ट्रांजैक्शन की है जब बैंक उन्हें बताता है इतना टैक्स कट गया है, और फिर वो इस टैक्स के हवाले से ग्रॉस अप करते हैं और फिर उन्हें पता लगता है। ये इनका क्वेश्चन। अच्छा उमर साहब, एक चीज यहाँ पर मैं कहूंगा कि अभी आपने देखा भी होगा, हमने इनकम टैक्स में भी पढ़ा कि इवन वो स्टेटमेंट्स भी अबॉलिश कर दी गई हैं। अब तो बैंक्स ने वो स्टेटमेंट जमा ही नहीं करवानी। इससे पहले वो लोग विथहोल्डिंग जरूर करते थे, लेकिन वो कभी भी गवर्नमेंट को प्रेजेंट नहीं करते थे इंडिविजुअल डिटेल, क्योंकि वो इस चीज में उनको ये था कि यार हमारा तो एक ट्रस्ट है अपने क्लाइंट के साथ, वो ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, उस पे वो कोर्ट्स पे भी गए, वहां से डिसीजन आए कि नहीं जी ऐसे ट्रस्ट को हम ब्रेक नहीं होने दे सकते। तो ना ऐसे पहले होता था, और इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये चीज एबॉलिश भी कर दी है। तो ना अभी ऐसे होता है। सिर्फ गवर्नमेंट के पास, पीआर के पास ये एक सोर्स नहीं है जहां से वो देख सके कि चीज को वर्क बैक करना है और हमने देखना है, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक दैट। वेरी गुड। और इसमें एक और क्लैरिटी कि नॉर्मली कंपनीज जो है ना, उनके बैंक अकाउंट में आप यकीन माने अनऑफिशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होती, उसके और बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं। आई वुड थिंक कि समवन मेकिंग अनऑफिशियल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अ कंपनी अकाउंट्स would definitely need a serious lesson in all the things. They are not up to mark if they are doing so. बाकी जैसे यावर साहब ने ये आपको ऑलरेडी बताया कि there are different mechanisms, withholding का डेटा जा रहा है जिससे एफपीआर को पता लगता है। बैंक एज सच आपकी लिस्टें नहीं दे रहा होता। हाँ, एक सेपरेट प्रोविजन इनकम टैक्स की मौजूद है कि अगर एफपीआर के पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है या ऑडिट या इंक्वायरी चल रहा है किसी बंदे का, तो उसका बैंक को लिखकर उस स्पेसिफिक केस की वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स या स्टेटमेंट्स डायरेक्ट बैंक से ले सकती है, लेकिन ये एज अ जनरल रूल नहीं होता, स्पेसिफिक केस टू केस बेसिस पे है। तो उस्मान खान साहब पूछ रहे हैं जी, रिडक्शन इन एडिशनल एडवांसेस टैक्स बाय 15%, will it be not the loss for FPR instead of revenue? उस्मान साहब, it's a good question. The thing is कि आप जो टैक्स पॉलिसी देख रहे होते हैं ना, इसको आप आइसोलेशन में नहीं देखते। आप ये देख रहे होते हैं कि इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसका ओवरऑल टैक्स रेवेन्यूज पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जिस तरह अभी मेरी और यावर की डिस्कशन में आपने सुना होगा कि ये मेन पर्पस है हमारे एग्री सेक्टर
और हमारे एसएमई सेक्टर को प्रमोट करने का कि उनके लिए फाइनेंसिंग ज्यादा अवेलेबल। अगर ये दोनों सेक्टर हमारे प्रमोट होते हैं और अपना पोटेंशियल अचीव करते हैं, तो जितनी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, उससे जितना एडिशनल रेवेन्यू हमें इकट्ठा होगा, दैट वुड बी सेवरल टाइम्स द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस। सो आई होप दैट आंसर्स। Next one is for you, Yavar. It's by Mr. Bilal Awan. He's saying, sir, my question is regarding Section 133, IT-enabled services for freelancers. There is exemption on their income in Pakistan. But where do they claim this exemption in business income if they are not employed? If they are Not employed. So he is basically making two things. He's making a statement claiming that the freelancer income in Pakistan on IT-enabled services is exempt as per Section 133. Secondly, yes. he is asking if a person is self-employed and not employed, where should they claim this exemption in their tax return? ओके जब आप कभी भी अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो तो आपने सिंपल अपने सारे प्रॉफिट एंड लॉस को एग्जेम्प्ट कॉलम में फीड करना होता है। वी नो कि एग्जेम्प्ट के रिटर्न के 3 सेक्शन है, नॉर्मल है, टोटल है, एग्जेम्प्ट है। इफ यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम समथिंग तो इसका मतलब है कि आपने सारा प्रॉफिट एंड लॉस उठाना है, एग्जेम्प्ट कॉलम में फीड कर देना है, ऑटोमेटिकली आपकी इनकम एग्जेम्प्ट आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट सेक्शन 133, इट मे बी अ क्लॉज 133 इन द सेकंड स्केड्यूल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Good. Let's move forward. That's it with the questions, and we can start the sales tax now. ओके, सेल्स टैक्स में अब हम चेंजेस देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे पॉजिटिव और सबसे फर्स्ट चेंज है, इट्स अबाउट द रिफंड पेमेंट थ्रू प्रॉमिसरी नोट्स। क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि काफी टाइम से रिफंड्स को जो है रोका गया है और वो इशू नहीं हो रहे, और स्पेशली सेल्स टैक्स रिफंड हो उसको तो बिल्कुल इशू नहीं किया जा रहा अदर देन एक्सपोर्ट। तो उसके लिए जो चेंज प्रेजेंट की है कि टोटली न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरेंस ऑफ रिफंड अवेलेबल टू टैक्स पेयर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड by way of introduction of a tradable negotiable instrument to be issued for the amount of sales tax refund due. Now the persons entitled to refund can opt for acquiring a sovereign negotiable instrument in the form of promissory notes issued by the government of Pakistan instead of cash. और कुछ characteristics है उस instruments के। First of all, the notes will be transferable in the manner provided. ये जब रूल्स आएंगे, रूल्स इसमें प्रेजेंट है, उसके अंदर उन्होंने तरीका भी बता दिया है कि सेकेंडरी मार्केट में जो है इसको आप लोग सेल परचेज कर सकते हैं। Maturity period will be 3 years from the date of issuance. These will be traded freely in the country's secondary market. The notes shall bear annual simple profit at the rate 10%. These shall be redeemable after the period of maturity. These shall be accepted by banks as collateral, and these shall not be subject to compulsory deduction of zakat. These are the few properties of these promissory notes, और I think ये एक पॉजिटिव जो है स्टेप है इस लिहाज से कि रिफंड्स जो बंद थे एटलीस्ट उनको कोई होप मिलेगा। वो जब उनको प्रॉमिसरी नोट इश्यू होंगे वो सेकेंडरी मार्केट में सेल करके अपने कैश फ्लो के इश्यू रिजॉल्व कर सकते हैं, उस पे आपको प्रॉफिट्स भी अर्न हो रहे हैं, आप कोलेटरल के तौर पे रखवा सकते हैं। तो इट विल बी कंसिडर्ड एज जैसे आपको रिफंड मिल गया है। तो ये जो है एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इम्पैक्ट है, स्टेप है। इसको गवर्नमेंट ने इसको सोचा, इसको देखा और इसको कंसिडर किया और कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला। गवर्नमेंटों ने नहीं सोचा था, ये प्रपोजल्स हम प्रोफेशनल्स पुश करते रहे थे कि इट्स अ विन विन सॉल्यूशन। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप प्रोमिसरी नोट इशू कर दें फॉर सम टाइम पीरियड, जिसके बाद वो मैच्योर हो, इन बिटवीन ये हो तो जो बंदा है बिजनेसमैन है उसका लिक्विडिटी इशू भी रिजॉल्व हो जाए, आपकी प्रॉब्लम भी हो जाए। इस गवर्नमेंट का क्रेडिट जो इसका है वो ये है कि दिस गवर्नमेंट एक्चुअली लिसन टू इट एंड इम्प्लीमेंटेड दैट। दिस प्रपोजल has been in discussion for last 5-6 years. So I totally agree with you. A fantastic solution, क्योंकि it's a win-win situation. हुकूमत का इशू क्या था? फाइनेंसेस नहीं है, उनको 3 साल का ब्रीदिंग स्पेस मिल गया। बिजनेस का इशू क्या था? आपने हमसे कमिटमेंट की थी, ये हमारा सरमाया हमें दे, हमारी लिक्विडिटी है, हमारा बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है, उनको भी वो मिल गया। लिक्विडिटी इशू भी रिजॉल्व हो गया, हुकूमत का भी हो गया। सो अ ब्रिलियंट स्टेप। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चेंज। ओके, 6th स्केड्यूल में बेशुमार एग्जेम्पशंस का जिक्र किया गया, कुछ चेंजेस दी गई वो हम देख लेते हैं कि एग्जेम्पशन ऑन इंपोर्ट और सप्लाई ऑफ आइटम विद डेडिकेटेड यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड हैज बीन प्रपोज्ड टू बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 30th June 2023. The exemption was previously available without any time restriction. ये उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन कर दी और आई थिंक इसको इन लाइन कर दिया
इनकम टैक्स के साथ, क्योंकि इनकम टैक्स में जो हमने चेंज देखा वो 2023 तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था और उसको उसके साथ इनलाइन करके इन्होंने यहाँ पर भी वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जब 2023 आएगा और हम सिचुएशंस देखेंगे उसके हिसाब से फिर वो एक्सटेंशन को आगे लेके जाते रहेंगे। इसी तरह सेकंड है एग्जेम्पशन फ्रॉम सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट or supply of appliances of colostomy has been proposed to be restricted for such appliances and items required for ostomy procedures. These are scientific terms I think, और ये जो है सर्जरीज के साथ जो है इसका लिंक है कि जो सर्जिकल आइटम्स जो आपके यूज होते हैं जिसमें आप किसी बॉडी पार्ट को ओपन कर रहे हो उसके लिए जो आइटम्स हो सिर्फ उस तक आपको एग्जेम्पशन दे दी गई है। पहले जो है ये एग्जेम्पशन बहुत वाइड थी, इसको कंट्रोल कर लिया गया इस एस्पेक्ट से। A new entry is proposed for exemption from sales tax on import of plant and machinery, excluding consumer durable goods and office equipment as imported by greenfield industries to manufacture taxable goods during their constructions and installation period, subject to certain condition and issuance of exemption certificate by the Commissioner Inland Revenue। अच्छा, अभी तक हमने ये देखा कि इनकम टैक्स में तो ग्रीनफील्ड के लिए बेशुमार एग्जेम्पशंस हमें नजर आती है। सेक्शन 65B है, सेक्शन क्लॉज 126L है, अगर आपने मॉडर्नाइजेशन करना है सेक्शन 65E है, SRO 1086 है, डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन इस दफा हमने देखा कि इन्होंने सेल्स टैक्स से भी ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रीज को, जो आपकी न्यू इंडस्ट्री देखेंगे, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। एंड इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो सेल्स टैक्स का एक ह्यूज अमाउंट होता है जो हमें प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर स्पेसिफिकली पे करना होता है। मुझे याद है कि जैसे ही ये बिल आया तो मुझे क्लाइंट की कॉल आ गई कि सर वो हमने इंपोर्ट करना है तो मैं जो है वो रोक लूं कि आप लोग हमें सेल से मिलेंगे। सर वो अभी एक्ट नहीं बना, ठीक है, जब एक्ट बनेगा उसके बाद की कहानी आएगी तो आप कितना इंतजार करेंगे, तो आप मंगवा लें, अगली मशीनरी पे हम फिर देखेंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि उनको जी सर फिर उन्होंने मंगवाया या वेट कर रहे हैं? नहीं, वो मंगवा रहे हैं अब। Acha, Harun Saab has just pointed out that we are only left with 24 minutes and we have almost 9 slides, 11 slides to finish. Okay. So what we can perhaps do is, instead of going through everything, just focus on the crux of the changes, because we will be sharing this presentation with all the attendees. All right. Okay, फिर ये लास्ट में हमारे पास है, it's about the machinery, equipment, spares meant for initial installation, balancing, modernization, replacement and expansion of project for power generation, especially through renewable energy sources like solar, wind। इससे रिलेटेड भी एग्जेम्पशन उन्होंने दी और इसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट एग्जेम्पशन थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया अगेन 2023 तक, ताकि जैसे हमने पहले पॉइंट पे बात की थी उसी अंदाज में। अच्छा, नेक्स्ट में आप जाएंगे तो इसको प्रमोट करें, सॉरी अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस को प्रमोट किया जा रहा है ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 9 आ गया सेलुलर फूड्स। सॉरी सर, सबका फेवरेट टॉपिक आ गया, टॉक ऑफ द टाउन। सेलुलर फोन्स। अच्छा, इसमें जो चेंज प्रपोज किया, पहले ये होता था कि टैक्स तो पहले भी सेल्स टैक्स वसूल किया जाता था, वो कलेक्ट करते थे, लेकिन उसकी बेसिस डिफरेंट थी, ठीक है। उसमें ये होता था कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेलुलर फोन, उसका स्क्रीन साइज, प्रोसेसर, मेगापिक्सेल्स, इन चीजों को देख के टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। अब उन्होंने उसको सिंपल कर दिया कि हम इस चीज में नहीं पढ़ते, ठीक है। इट हैज बीन प्रपोज कि हम जो है मोबाइल फोन या सैटेलाइट फोन को इंपोर्ट वैल्यू की बेसिस पे टैक्स करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो उन्होंने चेंजेस बताएंगे जिस तरह से, वो ये है, ठीक है। पहले यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में फिगर्स आ रहे होते थे वो बिल्कुल जो है यहाँ पे पिक्सेल्स लिखे होते थे, स्क्रीन का साइज लिखा होता था। अब वो बेसिस खत्म करके इसको आसान कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, और अब जो है वो यूएस डॉलर्स की बेसिस पे जो है वो टैक्सेस इन्होंने आप देख सकते हैं इसको कि 10,150 से स्टार्ट होता है और तकरीबन 10,300 तक जो है वो टैक्सेस चले जाते हैं। Umar sir, anything you have to say on this point, please? No, it's perfectly fine. I think Okay, एक now आर्गुमेंट ये कि जी टेक्नोलॉजी के हवाले से जो टेलीफोन, सेल फोन हैं, they have become a very important part of life और प्रमोट करना चाहिए। बट देन अगेन जो बंदा 1 लाख का हैंडसेट ले सकता है वो 10,000 भी दे, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कस्टम ड्यूटीज और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस आई, हम ये भी, क्योंकि ये हमारे बिल का पार्ट था तो इसको भी हमने गो थ्रू करना था। तो सबसे पहले जो रिडक्शन आई है वो इंपोर्ट्स ऑफ इनपुट या रॉ मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आई है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, जिसमें ये प्रपोज किया गया है कि हम लोगों ने
जो इंसिडेंस है कस्टम ड्यूटी का, कुछ रॉ मटेरियल को जो है हमने बिल्कुल खत्म कर देना है, रिड्यूस कर देना है उसको, सॉरी। इसमें फुटवेयर, टैनर्स, लेदर्स, ये सारे आइटम्स हैं और इसकी जो रिडक्शन है वो 31 मार्च से ही इफेक्टिव हो जाएगी। तो इसमें ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को फायदा होगा कि अपने रॉ मटेरियल के ऊपर उन्हें कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं पे करनी पड़ेगी। और अगर आप देखें जो एरियाज हैं ये सारे वो हैं जो हमारी कोर एक्सपोर्ट से लिंक है, उनके हैं। सो बेसिकली दिस टाइज अप विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट्स कि उनके रॉ मटेरियल ड्यूटीज कम ताकि वो कंपेटिटिव हो। और इसको आप टाई इन कर सकते हैं विद द पॉलिसी जहां पे इनपुट्स को कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा रहा है, कंपेटिटिव। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी अब रिड्यूस रेट पे मिलेगी, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, गैस भी रिड्यूस रेट्स पे मिलेगी ताकि हमारी इंडस्ट्रीज चलें और एक्सपोर्ट करें। इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इट्स अबाउट जीरो रेटिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी। करंटली इंपोर्ट ऑफ न्यूज प्रिंट इन रोल्स और शीट इज सब्जेक्ट टू रिड्यूस रेट ऑफ कस्टम 5%। उसको मजीद रिड्यूस करके जो है वो 0% पे प्रपोज किया गया। अगेन जो है वो इस सेक्टर की प्रमोशन के लिए है। ठीक हो गया कि वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करे तो उनको कस्टम ड्यूटी भी सेव हो जाए। और आप क्या समझते हैं यावर, ये क्या जमहूरियत के एक सतून को मजबूत करने के लिए किया गया है या इकोनॉमिकली इसका कोई वाइबिलिटी है डिसीजन की? आई थिंक वो जो पहले आपने बात की ना उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये शायद उसी के लिए किया गया है। सब कह भी दिया, कुछ बोले भी नहीं, सही है। आगे ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन प्लास्टिक मोल्डिंग कंपाउंड्स। अगेन कुछ कंपाउंड्स का इन्होंने जिक्र किया है जिसको जो है वो प्रपोज किया गया है कि इसको 5 से अगेन 3% कर दें। दीज आर वेरी जनरल चेंजेस, आई थिंक इसमें कोई ऐसा है नहीं डिस्कस करने वाला। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो इंक्रीज ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड मोटर व्हीकल्स है। ठीक है, इस चीज को जो है हम अगर देखें तो इसमें ये हुआ कि हमारी जितनी भी इंपोर्टेड मोटर कार्स है, एसयूवीज है, अदर मोटर व्हीकल है स्पेशली डिजाइन्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग स्टेशन वैगन्स एंड रेसिंग कार्स हैज बीन प्रपोज्ड टू बी इंक्रीज्ड एज अंडर। इस अंदाज में कि अगर इट्स 18 सीसी सिलेंडर कैपेसिटी है उसकी बट नॉट एक्सीडिंग 3000 सीसी, ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया गया 20 से 25%। और व्हीकल जिसकी 3000 से ज्यादा कैपेसिटी है तो उसको 20 से 30%। और डेफिनेटली ये इंपोर्टेड मोटर व्हीकल के साथ किया गया है। ये बेसिकली वही पॉलिसी है ना यावर, टू डिस्करेज द इंपोर्ट्स ऑन नॉन एसेंशियल आइटम्स। सो परफेक्टली फाइन। ओके, इसके अलावा जो है हमारे पास लोकली जो मैन्युफैक्चर मोटर व्हीकल है उसमें एक्साइज ड्यूटी 10% हैज बीन प्रपोज्ड टू बी लेविड ऑन लोकली मैन्युफैक्चर असेंबल्ड मोटर कार्स। ऑल्दो ये ड्यूटीज उससे तो कम है, ठीक है, लेकिन जो है अगेन ये उनका जो कॉन्सेप्ट यही है कि आपने जो लग्जरी आइटम्स है उन चीजों को थोड़ा सा साइड पे किया जा रहा है। उसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है ये इंट्रोडक्शन हुई है। और इसके साथ ही हमारा जो we are able to finish it about on time. Well done. So we still have 20 minutes left and we will take all questions now. Achha, let's go through the questions now. We have a question by Mr. Prem Kumar. What do you think filing biannual filing of withholding statement would count? Okay, he probably wants to ask, why do you think filing biannual withholding tax statements would count ease of doing business? Extremely simple, Prem. Simply because you would have to file less returns, invest less time in that, invest less resources in that, and it would be easier. It would save you time, resources in terms of compliance. Next one is by Mr. Irfan Mustafa. He's saying many exporters under FTR usually don't go under audit, but you might agree that directors take drawings through marketing expenses, etc., don't show any dividend. So in fact, hiding drawings and ultimately lost to FPR. How this will be catered in future or through this bill? Irfan, it comes up to the point that we were discussing कि unfortunately ये जो shenanigans होते हैं और misuse होते हैं इसकी वजह से फिर certain laws आते हैं, लेकिन although एक्चुअल तरीका कार तो ये है कि एफपीआर की कैपेसिटी जो है कंप्लायंस की उसको इंक्रीज करें, स्ट्रॉन्ग करें और वो इंश्योर करें लॉ कंप्लाई हो रहा है। एनीवे, ये क्वेश्चन मैं रेफर करूंगा टू यावर। यावर, दो पॉइंट है। एक तो ये कह रहे हैं कि एफटीआर में नॉर्मली ऑडिट नहीं होता,
लेकिन डायरेक्टर्स जो हैं वो ड्राइंग्स और मार्केटिंग एक्सपेंसेस के थ्रू पैसा निकाल रहे होते हैं और कोई डिविडेंड शो नहीं करते, तो इनफैक्ट उसका लॉस होता है एफपीआर को। क्या इस बिल में इसको एड्रेस किया गया है या फ्यूचर में इसको कैसे कैटर किया जाए? नहीं, इस बिल में अगर हम देखें तो क्लियरली इस चीज को तो एड्रेस नहीं किया गया। देखिए ये अब ये वैल्यूज पे भी आ जाता है कि मतलब मैं एक एक्सपेंस मेरा हुआ नहीं और उसके थ्रू मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ उसको, अपने डायरेक्टर को, ठीक है। अब एक चीज है कि अगर यहाँ पर हम एक्सपोर्ट सेक्टर का ऑडिट कर सकते होते तो एटलीस्ट हम उनकी बैंक बुक से मूवमेंट्स वगैरह ट्रेस कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम तो उनका ऑडिट करते ही नहीं, पैसा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस चीज को नहीं देखा जाता। लेकिन हाँ, अगर कैश में मूवमेंट हो रही है तब डायरेक्टर ले सकते हैं, लेकिन ये एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टर को एक ह्यूज अमाउंट दे भी देता हूँ, ठीक है, तो वो उस पैसे को कहीं से तो जस्टिफाई करेगा। अदरवाइज ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ना वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और जबकि फॉरेन रेमिटेंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो आई थिंक गवर्नमेंट उस एस्पेक्ट से एक स्टेप ले चुकी है। पहले होता ये था कि आपके पास कहीं से पैसे आते थे, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसे कंट्री में वापस आ जाते थे, लेकिन अब उस एस्पेक्ट को भी कंट्रोल कर लिया गया कि 10 मिलियन से ज्यादा ना आप पैसे मंगवा सकते हो। तो एक सेल्फ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल है, चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल है। अगर वो ले भी ले तो उसकी डिक्लेरेशन मुमकिन नहीं होती। हाँ, एमनेस्टीज वगैरह ये एक स्टेप है जो गवर्नमेंट खुद ऑफर करके उस सारे सिस्टम को फिर दोबारा से कहती है कि यार जो छुपा हुआ है वो दोबारा से सामने आ जाए। तो काफी स्टेप्स टाइम के साथ साथ लिए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट सब्जेक्ट टू ऑडिट हो जाए तो वो तो एक अलग स्टेप हो जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि एक्सपोर्ट को सब्जेक्ट टू ऑडिट कभी किया जा सकता है। आई थिंक वी आर मिसिंग अ ट्रिक हियर। इरफान ने जो टर्म यूज की डायरेक्टर्स वगैरह, कंपनीज जो हैं दे आर रिक्वायर्ड टू हैव द स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, एफटीआर ऑडिट नहीं हो रहा, लेकिन यू आर हायरिंग अ फर्म ऑफ क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स टू एक्चुअली डू योर ऑडिट, और अगर वो उस ऑडिट में वो चीज नहीं देख रहे तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक एक्सेप्शन की आप बात कर सकते थे कि जी जो स्मॉल कंपनीज हैं अंडर द कंपनीज एक्ट they don't need to file any audited accounts, but again they actually practically need to have the audit, because without that they can't file their tax return. एफपीआर रिक्वायर्स के ऑडिटेड अकाउंट्स हो। तो ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे आपका एक ऑडिट एज सच एफपीआर का ऑडिट नहीं हो रहा, लेकिन आपका अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है। एंड प्रैक्टिकली लेट मी शेयर दिस, in my experience, there are some very good officers at FPR, especially जो younger lot आ रही है, qualified लोग hire कर रहे हैं, they are good. But जो वहाँ पे पुराने audit होते थे, they were kind of weird and funny. हमें बड़ा issue होता था उन्हें basic concept समझाने में. So compare that with a firm of accountants doing your audit, statutory audit तो कर रहे हैं ना, आपने अपनी tax return जमा करानी है, तो अगर वहाँ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो ये चीज कर रहे हैं तो फिर वहां पे पॉइंट आउट हो जानी चाहिए, और अगर वहां पे पॉइंट आउट नहीं हो रही तो इट रेजेस अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द फर्म ऑफ ऑडिटर्स एज वेल एज द कंपनी। हैविंग सेड दैट, अगेन दिस टाइज अप विद द कांसेप्ट जो हमने डिस्कस किया कि आपने डिफरेंट चीजों को एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि वहां पे वो कहाँ फिट हो रही है, इस वक्त उसकी प्रायोरिटी क्या है और उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। इस वक्त बिगेस्ट प्रायोरिटी है कि आपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, जो आपके पिछले चंद सालों में 25 बिलियन से गिर के 22 बिलियन के भी करीब आके रह गई है, जबकि उसको ग्रो करके 30 बिलियन पे चले जाना चाहिए था। उसका रिजल्ट है जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, वो आपके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के ऊपर स्वेयर प्रेशर डाल रहा है, आपकी जो फॉरेन ऑब्लिगेशंस है वो मीट होने की प्रॉब्लम हो रही है। तो इन ऑल दोज पोजीशंस प्लस जो हमने पहले बात की, 70 लाख आपके वो लोग हैं जिनको आपने अभी फॉलो अप करना है और सिस्टम में लाना है, और इसके बाद अभी हम विदहोल्डिंग डेटा की बात नहीं कर रहे, जो हमने इतने विदहोल्डिंग टैक्सेस लगाए थे ये आर्ग्यूमेंट देके कि हम तो जी इनिशियली डेटा लेना चाह रहे हैं क्योंकि उसकी बेसिस पे हम अपनी टैक्स नेट बढ़ाएंगे, बट उसको अनफॉर्चुनेटली एक कैश काउ की तरह ट्रीट करते हैं, नेट नहीं बढ़ाते। सो इवेंचुअली दिस थिंग कैन कम, बट इवन राइट नाउ ये नहीं है कि बिल्कुल छोड़ा हुआ है। जो बाकी डिफरेंट हमारी रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसके नतीजे में उन्हें अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कराना होता है। बाकी इन ड्यू टाइम जैसे हमने ये बात डिस्कस की, आई एम प्रीटी श्योर कि इसके फर्दर कंट्रोल्स और चेक्स एंड बैलेंसेस इंट्रोड्यूस होंगे। प्रेम कुमार साहब ने जी अपना फॉलो अप क्वेश्चन दिया है, और इट विल बी cumbersome फॉर कंपनीज टू रिकॉन्साइल। अच्छा,
This ties up with the question जो इन्होंने कहा था कि कम withholding statements जो हैं फाइल करना, ease of business कैसे हैं. तो I'll pass this on to you. वो कह रहे हैं will it be cumbersome for companies to reconcile after every 6 months? अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूँ कि अभी ट्राइब्यूनल का एक नया डिसीजन भी आया है, ठीक है, कोई 1 वीक पहले, जिसमें उस डिसीजन में ये कहा गया है कि जी रूल 44 के तहत जो नोटिस इश्यू होते हैं उसमें रिकंसिलिएशन टैक्स पेयर के ऊपर है कि उसने अकाउंट्स के साथ अपने रिकंसिलिएशन को, यानी कि रिटर्न के साथ मंथली स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल करना है. अच्छा, मैं 6 मंथ पे आ जाने से इस चीज पे एग्री नहीं करता कि आपका टाइम बच जाएगा. हाँ, आपका अगर हर मंथ में थोड़ा थोड़ा टाइम बच रहा है तो वो 6 मंथ में जाके उसकी कैलकुलेशन एवरीथिंग वो आपके लिए हेक्टिक भी हो सकती है अगर आप हर मंथ उसको सेट नहीं कर रहे हो. इट कुड बी हेक्टिक फॉर यू. ठीक है, तो टाइम सेविंग जहां तक देखा जाए तो वो मुझे इसमें नहीं लग रही. अच्छा, रिकंसिलिएशन का जहां तक सवाल है तो रिकंसिलिएशन में जो इश्यू आते हैं वो ये है कि विथहोल्डिंग तब की जाती है व्हेन यू आर मेकिंग अ पेमेंट, ठीक है, और एक्सपेंस तब बुक किया जाता है जब एक्रू हो जाता है. तो इसकी वजह से आइटम को रिकंसाइल करने में थोड़ा सा इश्यू जरूर होता है, लेकिन अगर आप हर चीज को हेड वाइज लेके चलो और उसकी मूवमेंट्स को देखो तो वो बड़ा इजी हो जाता है. लेकिन अगेन अगर हम इस एस्पेक्ट से देखें जो मैंने पहले कहा था कि अगर आईआरएस फुली फंक्शन हो जाए, अगर आईआरएस फुली फंक्शन हो जाए और हमारा चालान प्रोसेस, चालान बनाने का, पीएसआईडी बनाने का प्रोसेस आईआरएस पे चला जाए, तो उससे ये बेनिफिट हो सकता है कि चीजों ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाए रादर देन हमें इस एफर्ट में पड़ना पड़े. तो पहली बात तो है कि मैं इस चीज पे कहता हूँ कि मंथली स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, विथहोल्डिंग स्टेटमेंट का, ये खत्म हो जाना चाहिए विद टाइम और हमें आईआरएस को फुली फंक्शन करना चाहिए. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये रिकंसिलिएशन जो है, ये इससे टाइम तो नहीं बचेगा हमारा, सिर्फ ये है कि उन्होंने थोड़ा सा आसान कर दिया. शायद ये किसी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा. थैंक यू. Thank you, Yawar. Next question is by Mr. Muhammad Azim. He's saying, is it a good decision that who filed income tax return after due date will not become active taxpayer till tax year 2019? Azim, always remember there are no straight answers in this area. I mean, on the face of it, the intention is very good that people should be complying with their deadlines. Enough is enough. They should get in line. Well and good. But as I explained before, the process has to be phased. You can't impose changes immediately. You have to educate people and then bring them within the loop. So currently what we have proposed government, and by we mean, I mean ACCA, tax bars, chambers, we have proposed government that in this instance, allow the people who have filed their returns till the time that you are making this change and the new revised ATL would be issued in March. Anybody who files the return till that time should be in the ATL. Reason being, there are two major arguments. Number one, you introduced a major change. Previously, ATL was being issued and revised every week. Now you have said it will be done once a year, and anybody who misses the deadline for the whole year, they would not be able to come onto the final list. This basically conflicts with your stated intent or our stated intent of increasing the tax net. How? Because then the people would lose incentive. I mean, in these 3 months or 2 months or a month of what remains, why would people file return? What's the incentive? They would not be fileable. So you'll end up losing them. That's a strong argument. And secondly, there is also a technical lacuna. By the time the returns were finalized, the statutory time period was not completed till some deadlines. So if the government does not relent on that, this can again end in a court of law, because the problem is the government, the FPR actually, does not issue the return in July. That is one of the primary reasons why they have to make the extensions. The return is released somewhere in August, then there are some changes after problems are pointed out. So somewhere near the end of August or September, you have a proper return, and then you have to give a minimum period of 3 months. So all these issues. So in short, the intention is very good, but in this overlap period, we are of the opinion that the government should allow some relaxation this one time, educate the people meanwhile during the next year, and then implement it properly with proper compliance from next year. The next question is by Mr. Amir Amiruddin. He's saying, I guess we have 5 zero-rated sectors. Don't you think we have to increase the sectors? Yawar, don't you think the zero-rated sectors need to be increased?
जीरो रेटेड सेक्टर को हम देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जीरो रेटेड सेक्टर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक जो है सबसे बड़ा उसमें है। लेकिन एक चीज है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना, ये मैटर करती है कि हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट होती है, इवन अगर वो एग्जेम्प्ट भी हो लोकली डोमेस्टिकली, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो जीरो रेट में चली जाती है जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया? तो एक इतना बड़ा हमें ऑलरेडी एक हमें जो है वो एरिया दिया हुआ है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें जीरो रेटेड सेक्टर की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि हर तरह की एक्सपोर्ट आप जब भी करते हो, अगर आपकी एग्जाम सप्लाई हो, टैक्सेबल हो, ऑटोमेटिकली जीरो रेट में जाके आपको रिफंड्स मिल रहे हैं, तो आपको मजीद क्या जरूरत है कि आप इस सेक्टर को या इस नेट को जो है मजीद ब्रॉड कर दो। And I'll add on to this कि ये जीरो रेटेड सेक्टर्स वो हैं जो हमारे प्राइमरी एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, और आर्ग्यूमेंट ये थी कि अगर वो जीरो रेटेड नहीं होते तो उनके ऊपर अनफेयर टैक्स इंसिडेंस होता है, लोकल जो उनके रॉ मटेरियल्स या बाकी चीजें आ रही हैं, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेक्टर्स को जीरो रेटेड किया गया। बाकी लाइक यावर हैज सेड। Next question is by Usman Khan. Dear sir, if you could please revise motor vehicles duty rates. Last 2 slides quickly. Usman, this presentation would be shared with you, and this would be as we speak. Yes, the presentation is available through Handouts, so they can. Perfect. You can go in the handout section right now, download the presentation, and have a look at that. And the recording will also be available. So if they want revision of any discussion, they can always watch the recording. So 1 hour after the session, they will automatically receive the link. Perfect. Good. Okay. Unknown attendee has asked, can authorities detain a phone if we don't want to register it? Yavar? So, sir, please repeat the question. Can the authorities detain a phone, mobile phone, if we don't want to register it? I'm not getting the question. Please rephrase it. Maybe it's. He's asking like all these taxes that have been imposed now on the mobile phone. If I don't want to, and then you have to register the phone with the PTA. So he's focusing just on the registration part. He's saying if I don't register my mobile phone, I don't know why not. Anyway, he's saying if I don't want to register my mobile phone, can the authorities confiscate my mobile phone? नो अगर उनको पता लगेगा तभी वो कन्फिस्केट करेंगे। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं कि पहले तो ये है कि जब आप IMEI नंबर या CMO रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपसे या तो तब टैक्स वसूल होगा, या आप खुद इंपोर्ट करके ला रहे हैं तब भी आपसे टैक्स होगा। लेकिन अगर जिस दिन आपने उसको इसमें सिम डाली और उसको एक्टिव करने की कोशिश की, उस दिन आपसे टैक्स कटेगा। अगर आपके पास वो पड़ा है तो वो किस काम के आप रखें अपने पास? वो टैक्स का तो उन्हें इश्यू ही नहीं है, वो कह रहे हैं बस मैंने रजिस्टर नहीं करना। क्योंकि एक एक्सटेंशन है क्वेश्चन की, आप रजिस्ट्रेशन का इशू है, आप अपने पास घर में रखे ना उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, ना आप यूज कर सकेंगे, बी फाइन विद इट, देन नो इशू। उन्होंने जी आगे फर्दर एक्सटेंशन दी है, इफ वी डोंट वांट टू यूज इट इन पाकिस्तान, तो वो कह रहे हैं अगर मैंने पाकिस्तान में यूज नहीं करना तो मैं रजिस्टर ना कराऊं, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, आप उसको बाय रखें, ऑफ रखें। रजिस्ट्रेशन तो पाकिस्तान में करने के लिए ही करनी है, क्यों यार? इसी तरह बिल्कुल। अच्छा जी, few questions left and we have a few minutes, so let's finish them. Okay, next one is again by Amir Amiruddin Saab. We are getting so much foreign investment now. Sure. Can't you think we have to make or revisit repatriation of profits policy? The policy should certainly be made, but Amir Saab, we still need to have a lot more foreign investment. Nasir Khatak is asking what practical steps can be taken in order to stop businesses from tax evasion. As we all know, most businesses prepare dual books of accounts, only giving tax incentives. Would that be enough? Would you like to answer this question, Yavar? या अच्छा, टैक्स इवेजन को, ये एक बहुत बड़ी बहस है कि टैक्स इवेजन को कैसे रोका जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबसे जो जरूरी चीज है, एक तो अवेयरनेस ऑफ द लॉ, क्योंकि लॉ से बहुत ज्यादा डरा जा रहा है। ठीक है, हम डिफरेंट क्लाइंट से मिलते हैं तो वो ऐसे समझते हैं कि जैसे कि कोई आपको ना बिहाइंड द बार्स लेके जा रहा है। ठीक है ना, जैसे आपकी किसी ने जो है वो पुलिस में FIR जो है वो कटवा दी, अगर नोटिस आ जाए, तो ये जो फियर है, ये फियर जो है बेवजह है। अगर आप उनको अवेयर करें कि इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ये तो सिंपल कंप्लायंसेस है, आप वैसे भी कर रहे होते हैं, आप इन चीजों के हिसाब से करेंगे, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक अवेयरनेस होगी, दूसरा वैल्यूज आपकी,
ठीक है, आपने आपने अपने अंदर ये इनग्रेन करना है कि जी हमने टैक्सेस पे करने हैं लाजमी। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी बड़ी चीज जो मुझे देखने को मिली वो फियर सबसे टॉप पे है कि हमें इतना डर है कि हम समझ नहीं आती कि उस डर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। जब तक आप 2-3 साल उस क्लाइंट के साथ काम करें, उन्हें समझाते रहे, आप यकीन माने कि 3 इयर्स में उनमें एक चेंज फील होता है बाकायदा। तो एविएशन को हम जरूर रोकेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज जो है वो अवेयरनेस है कि उनको बताओ कि लॉ से डरने की जरूरत नहीं है, उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, जो अदर एस्पेक्ट है कि जिनको पता है और उसके बावजूद भी एवेजन हो रही है, तो यहाँ पर जो है अगेन मैं कहूंगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, टैक्स अथॉरिटीज का रोल, उनके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज का अवेलेबल होना, कि डुअल अकाउंटिंग होने की, डुअल बुक्स ऑफ अकाउंट होने के बावजूद वो बच कैसे जाते हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है, कॉम्पिटेंसीज की भी कमी है। ठीक हो गया, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, अगर इस पे बात करें तो बहुत सारी चीजें सामने आती है। Okay, I agree with what Yavar has said. I'll just add one thing. Uh, the reforms aspect. We need to also reform our entire taxation policy and the taxation apparatus there. And the good thing is that this government is working on that. And it's expected that in the next few months, you'll inshallah be hearing those reforms. And then inshallah, we'll see the positive aspects of the changes. So the next one is, it's actually a very interesting question. Mohammed Yusuf, a very good question. He's saying, I know it's out of discussion, but what about introducing taxation on property investments? For example, 1.6 million applications are being received by DHA compared to available allotments of only 10,000 plots. So what's he trying to say is that, okay, those 10,000 people, you already brought them within the tax net. What about the remaining 1.6 million minus 10,000 who applied? So those people are also the people of resources who have those. I think it's a very good suggestion and very good, and we'll add that in our taxation proposals of ACCA as well. Good idea, Yusuf sir. Next one is Waqas Ahmed. Sir, do you think after reduction of tax rates to certain industries, government will be able to get required revenue for the current fiscal year? Yeah. अगर तो गवर्नमेंट का मकसद ये होता कि उनको जो है वो अपने टारगेट्स लाजमी मीट करने हैं और इसी अंदाज में करने हैं, ठीक है, तो ये बजट कभी भी सामने, बिल कभी भी सामने ना आता हमारे। ठीक है ना, गवर्नमेंट का ये पर्पस था कि हम लोगों ने मजीद कलेक्शन करके टारगेट मीट कर, यही तो पॉजिटिव साइड है कि जो कि हमें देखनी चाहिए। ठीक हो गया कि उनको अपने जून के टारगेट्स की परवाह नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने बिल दिया और काफी रिडक्शंस की काफी चीजों पे। अगर हम इन तमाम चीजों को सम अप करें तो एक मेजर चंक ऑफ मनी जो उनको एडवांस टैक्सेस की फॉर्म में मिल जाना चाहिए वो उनसे खत्म हो रहा है। लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि उनके इंटेंशंस क्या है, वो इनिशियल स्पीच में जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्लियरली बताया कि जी वो इज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये असल पर्पज है और उसी आइडिया के लाइन चल के उन्होंने जो है वो सारे प्रपोजल्स यहाँ पर दिए। That brings us to the end of questions, and congratulations and well done to both of us. We have finally finished the question and another one came. So, and another one, great. So, very nice presentation. Team, thanks. Thanks. Waqas Ahmed is saying, but will the relief be passed on to final consumer? You have to be more clear. What are you referring to, Waqas? Rashid is saying, my question is irrelevant but important. Is ACCA providing opportunities for SAP or Oracle training? Well, we have the man, just the man to answer that question. Harun sir, is ACCA doing that? Yes, ACCA has been actively offering opportunities for SAP trainings for some time now. There's been an issue, which is that SAP has introduced a new product by the name SAP Learning Hub, which is only available for students, not for members. And unfortunately, we can't allow members to. And so, by the way, that program is highly subsidized for a training that costs about 3 to 4 lakh rupees, then being made available at about 90,000, 95,000 rupees to our students and affiliates. Unfortunately, it's not available for members at the moment. We are still working with EHC to come up with a solution to this. At the same time, Brain Telecom, and a member works for Brain Telecom in Pakistan, in Lahore.
they have set up another training wing for Oracle training. So we right now in discussions with them. If they come up to our standard, if they have licensed software, and if they have all the relevant licenses in place, we are going to work with them. I mean, the proposal has been with us for about a year, and we've been saying no to them because they did not have the relevant licenses to run the training. So ACC cannot be involved in such an affair. Therefore, we asked them to have a training facility first, to get all the licenses first, and only then. And now they'll come back to us with these things. We will go and have a look at their facility, and only then we'll offer the Oracle training as well. Okay, we are getting some appreciations now. Farhan is saying thanks. Sajawal is saying this is my first webinar session. Thanks, ACCA. Asghar Khan is saying, sir, did this too? Our video will be available later. Yes, Asghar, that's been told several times. You'll receive an email shortly and you'll have the presentation. Thank you, thank you, thank you. Okay, thanks everyone. That brings us to the end of the session. Thank you, Yawar. Thank you, Harun Saab. And thank you to members for sparing the time today. We hope this was of benefit to you, and we look forward to adding value and seeing you in the future sessions. Thank you. Have a good day. Thank you. Okay. I think just one last announcement. We love to have your feedback on this new method. In fact, we forgot to mention that I'm sure this was so seamless. Do you know that Yawar right now is sitting in Peshawar and Umar is sitting in Lahore? So, I mean, I think I was impressed with the clarity of the sound and the way things happen. Do you like this new format of conducting webinars? Do you want, webinars to have multiple experts? I mean, we're not short of talent. We have many members with this skills. So we need your feedback. Do share your feedback with us. Number two, once again, the announcement that in the next week we are going to hold an open house session for members, and we will try to bring in all MNP members and the senior management team of ACCA together. Any burning issues, any issues that you're facing, do bring those up, and we'll try to give you a very patient listening, and that will be a good sort of feedback and direction for us also to follow. So thank you very much. Umar, over to you once again. There's some comments coming in. Yeah, thank you very much. And we are getting the answers. Yes, this format is very fine. Thanks. Yes, having more than one expert is great as they cross-question each other, that clear things up. Yes, we prefer online as many members can't attend open house sessions or outside main cities like Lahore, etc. Okay, thank you very much for your feedbacks. Please keep them coming. And inshallah, we'll see you all in the next session. Have a very good evening. Take care.